Check, check. Check.
All right, guys. So, hi, everybody. In case you don't know me or in case you have forgotten me, let me introduce myself. So, I am Sandeep Gupta and I'm here to teach you a subject called OOPM. The full form of OOPM is Object Oriented Programming Methodology. And this object oriented programming methodology is nothing but the Java programming language. So, in your semester 3, the name of the subject is OOPM, but in reality, you will be studying the Java programming language. All right. Okay. Now, before we start with the Java programming language, let's understand a few problems which you may face in this particular subject, in this particular language. So let's wrap it up a little fast. The first problem with Java is that it is a programming subject. Now, some of you will wonder, what if it is a programming subject? So what happens is many of you may have taken CP, that is C programming, very lightly in your semester 1. So if you have taken C programming very lightly in your semester 1, that means that your programming concepts are not so very well defined. Okay, they're not so good. And if they're not so very good, you may have little, not much problems in Java also. So the first problem is that it's a programming subject and you need to be aware if your programming skills are not very good. A bigger problem over here is that a syntax of Java is very long and very difficult. Now, what exactly do I mean when I say that? So let's take a particular example. Let's say you are doing C programming, and in C programming, let's say you have a variable n, and you want to read the value of variable n from the user. And let's say variable n is of data type int. So can you tell me what statement you are going to write in C programming? By the way, whenever I ask you a question, unmute yourself, answer the question, and then again mute yourself. So come on, tell me what statement will you write in order to read the value of n from the user? Come on, unmute and answer the question. We can use scanf. Yeah. So you will write a statement like scanf. Can you write printf, by the way? Can you write printf? Yes. For reading? Can you write printf? No, okay. It should be defining program only, no? Very good, very good. All right. So printf is the statement which is used for the purpose of display. Many students answer printf. That is why I showed here over here. Anyway, so the point over here is that if you want to read the value of n, where n is of data type int, you will write a simple statement like this: scanf %d %n. Okay, so it is as small as this. Now, if you want to do the same work in Java, first you will write this. Then you will write this. That's not all. And finally, you will write this. Okay. Now, what exactly all this means, obviously, we'll see that later when the syllabus starts. For time being, just make a comparison. One small thing in C language, see this one small thing in C language became three such big statements in Java. Okay. So what happens over here is overall, the programs of Java become very long, very exhaustive, very difficult. Why? Because the syntax itself is very long and very difficult. Now, tell me one thing, in C language, an average program was of how many pages? By the way, when I say page, I mean one page is one side. Okay, one page is one side. So in C language, an average program was of how many pages? Can you tell me? Come on, tell me. So in C language, normally the programs which we used to write was of normally, half a page or maximum 1 page. In Java, the average length of the program is minimum, I say minimum 2 pages. So even if you take a very small program of Java, it will be of minimum 2 pages or 2 sides. Okay. So all in all, the syntax of Java is very long, very difficult, which you will see very soon. Anyway. Now, without wasting any time, let's start with the syllabus. Okay, so keep a pen and a notebook with you. All right, I'll make you write many things in your notebook. So in your notebook, give the heading chapter number 1, Introduction to Java.
And under that, write 1.1 history of Java. Come on, do that. I'm waiting for you. So give the headings. All right. Now, in chapter number 1, we'll be basically introducing ourselves to Java. Okay. And we'll be studying some fundamental concepts over here, starting with the history of Java, which is quite interesting. And you should know this history because you could be asked these questions in oral exams, in vivas, in practicals. Okay. So pay good attention. Now, it's quite interesting and slightly difficult. Okay. So please be attentive. Now, before we start with the history of Java, let's understand a few things in general. So what I'm telling you now, it is not about Java, it is some general concept. You need to understand first one thing properly, that what is a program and what is a programming language. Many students get confused between these two, okay, especially if your concepts of C programming are not very good. Many students get confused over here. By the way, a program is also called a software, also called an app. So whether you say app, whether you say software, whether you say program, it is one and the same. Now, in your semester 2, you had studied C programming. Now, tell me one thing, that C, which you studied in semester 1, it was a program or a programming language? Come on, unmute and answer. Whenever I ask you the question, unmute and answer. Come on. Programming language. Yes, that C was the programming language. And using the C programming language, we wrote many programs, like we wrote factorial of a number, check whether the number is prime or not, quadratic, and so on. Okay. So similarly, just like C, Java is also a programming language using which we are going to write lots and lots of programs in this particular semester, in this particular course. Please understand one thing, every app which you use on your cell phone is a program, is a software. So WhatsApp is a program, YouTube, Instagram, all of them are programs. And understand one very simple thing, that all programs are written in some or the other programming language. All apps are coded in some or the other programming language. Okay, so coming back. Now let's come to the history of Java, which is interesting and little difficult, so please be attentive. Now what happened is, it was the year 1990. So in the year 1990, the Sun Microsystems of USA, or I will say this way, that Java was invented by an organization called Sun Microsystems of USA in the year 1990. Now let's try to understand how Java was invented and the story behind this. So what happened is, in 1990, the Sun Microsystems of USA, what they wanted is, they wanted to develop programs, they wanted to develop softwares for consumer electronic devices. I repeat, around the year 1990, the Sun Microsystem of USA wanted to develop software, wanted to develop program for consumer electronic devices. Now, what exactly is the meaning of this? So let's try and understand that thing. Okay. So what is a consumer electronic device? So something like a refrigerator, something like oven, washing machine, all these are consumer electronic devices. Now, I hope you know that these devices contain small built-in programs. For example, if you have a washing machine at home, okay, let's say you have a washing machine at home, okay. Now, this washing machine will contain a very small program, and this program will basically control the working of this washing machine. So that way, almost all the electronic devices, they have very small built-in programs which control the working of these machines. And when I say consumer electronic devices, I mean devices like AC, fridge, washing machine, oven, and so on. So in the year 1990, the Sun Microsystems wanted to develop softwares which could control these electronic devices. Now, please pay attention that they wanted to develop software. They wanted to develop programs. Okay. Now, every program is written in a programming language. Okay.
So obviously, if you want to develop a software to control the consumer electronic devices, then first of all, you need a language for that. You need a programming language for that. So what Sun Microsystems did is they formed a team. The name of the team was, they formed a team, and the name of the team was Green Project Team. And this Green Project Team was headed by two prominent scientists, two prominent programmers, James Gosling and Patrick Norton. So these two scientists and many others in the team, they were given the task, okay, you develop software for controlling the consumer electronic devices. Now, what this team did is that first of all, they developed a programming language called O by the year 1992. Okay, please don't forget that every program needs to be written in a programming language. So their ultimate aim was to develop this software, this program. And for that, they first created a programming language called Oak in 1992. Now, this Oak which they had developed in 1992, using this Oak, I repeat, using this Oak, they developed software, they developed programs which could control the consumer electronic devices. Okay. So please understand what happened till 1992. So till 1992, they developed a programming language called Oak. Using Oak, they developed softwares which could control washing machine, fridge, and so on. Okay. Now, this Oak programming language had two prominent features, two very important features, of which the first important feature was platform independence. Platform independence. Now, we need to understand properly over here what is the meaning of platform independence, and you need to remember this till next lecture. So please be very attentive. Now, platform over here means machine. It could be any machine like washing machine, fridge, computer, anything. Now, what is the meaning of platform independence? So let's understand this. Now, let's say you have one washing machine, let's say LG washing machine, and your friend has one more washing machine, let's say Samsung washing machine. Now, both the washing machines obviously will do the work of cleaning clothes. But now answer my question, listen to my question carefully. The internal architecture of these two washing machines, the internal machinery of these two washing machines will be exactly same or slightly different? Come on, tell me. The internal machinery architecture of these two washing machines will be exactly same or slightly different? Come on, answer the question. It's okay if you give me the wrong answer. Giving a wrong answer is better than keeping quiet. Whatever you feel, whatever you think, tell me. Yeah. Unmute yourself. Yes. The internal architecture of these two washing machines obviously will be slightly different, Now, let's say, listen to me carefully. Let's say you write a program in Oak, to control the LG washing machine. So using Oak, you write a program, and this program could control the LG washing machine. Okay. Now, what happens is, listen to me carefully, this program was written in Oak, and Oak was platform independent. So what will happen now is the same program, I repeat, the same program which controls the LG washing machine can be used to control even the Samsung washing machine, although the internal architecture of LG and Samsung are different. Okay. So now I will say that my program is platform independent. Why it is platform independent? Because by the platform over here means machine. So why it is platform independent? Because the working of the program does not change from one machine to another machine. The program remains the same whether you use it on LG machine or Samsung machine, and the behavior, the output of the program will be same. Now, if you really understood the meaning of platform independence, answer a very simple question. The C language which you studied in semester 2, was it platform independent? Come on, tell me. Yes, sir. Yes. See, yes, you write a program in C on your computer, or you copy it on a pen drive, you give it to your friend who has a different computer.
Your C program will work the same way over there also. Okay, so C language is also platform independent. Now, also please understand, we are talking about the year 1992. So 1992 is that year when I think probably you were not even born. So at that time, platform independence was a very big feature. Not all languages were platform independent. In fact, C language is also not 100% platform independent, but Java was 100% platform independent. I'm sorry, but O was 100% platform independent. O. Now, also please understand why this platform independence was very important for Green project team. See, the concept is very simple. They wanted to use Oak for developing programs where the programs could control consumer electronic devices. Now, if this program, I mean, if Oak is not platform independent, if Oak is not platform independent, tell me what will be the problem. Come on, think practically and tell me what will be the problem. Come on. It's very simple. If it was not platform independent, if Oak was not platform independent, tell me what would have been the problem. Simple. Come on, tell me. We have to write two different programs. Yes, yes. In fact, not two, many different programs. Okay, there are many companies which produce washing machines. Okay, LG, Samsung, Godrej, Whirlpool, IFB, and so on. So for every washing machine, I will have to write a different program. Okay, so that is why their focus was too much on platform independence. So anyway, till here, what happened? Till here, Oak was invented. Oak was used to develop programs to control machines, and Oak was 100% platform independent. By the way, one small simple thing, because the programming language Oak was platform independent, that is why the programs written in Oak were platform independent. Okay, so that feature of platform independence, it comes from the language. If the language is platform independent, then the program will also be platform independent. Anyway, now all this was going on, and simultaneously, there were a different set of people who were responsible for inventing the internet, the World Wide Web in 1993. Okay. By the way, the invention of the internet, the invention of the World Wide Web has nothing to do with the Green project team. Okay. This was done by a separate set of people, and this was done by a separate set of people. By the way, internet was mainly invented by a person called, I think, Tim Berners. Okay. So anyway, in 1993, the World Wide Web or the internet came into existence. Now, once again, let's talk something in general. Things are very interesting. Things are very difficult. You need to pay attention. See, what you need to understand is that the internet is full of programs. Everything on the internet is a program. So whenever you see a web page on the internet, that web page is a program. Again, every app of your cell phone is a program. In fact, if you want to surf the internet, you need a program. Come on, can you tell me which program do you need to surf the internet? What is the name of that program? Tell me. Which program do you need to surf the internet? Come on, tell me. You need a web browser like Google Chrome, like Mozilla Firefox, and so on, like Safari. So what I'm trying to stress over here is that every damn thing on the internet is a program, all right? Now, before we proceed further, also let's understand one thing, that different programming languages have different strengths. I mean, there are different areas in which different programming languages are used. For example, if you talk about C++, just a minute. For example, if you talk about C++, C++ is mainly used for development of video games. If you talk about C, it is mainly used in operating systems. If you talk about Python, Python is mainly used for data analysis and machine learning. So if one wants to develop a video game, if a person wants to develop a video game, he will probably not use C language or Python, although Python is world's #1 language. He will still not use Python. He will opt for C++.
So the point I'm trying to make is every programming language is used in some particular area where it is strong enough. So why am I talking about all these things? Because when internet was invented in 1993, okay, programmers wanted a programming language which would work very well on the internet. They wanted a programming language which will work very well on the internet. Okay. So now all these things were going on. The programmers wanted a language which will work very well on the internet. Meanwhile, this green project team, obviously they were aware of the internet and the things going on with the internet and all these things. So what this green project team did is, listen to me carefully. In 1993, they developed something called web applets using the Oak programming language. In 1993, using the Oak programming language, they developed web applets. Okay. Now, what are web applets? So very simple. Web applets are nothing but web pages. What happened is, before 1993, the internet was very boring. Okay, the internet contained only plain text. Okay, it did not have, the web pages of the internet did not have photographs, sound, animation, nothing. Okay, plain text. The internet contained only plain text, which was quite boring. Now, using the Oak programming language, okay, this green project team developed web pages called web applets. And these web applets, they were quite interactive and they look like the web applets of the modern day. For example, if you take a simple web page of, let's say, Amazon, okay. So the Amazon web page, it will have animations, all right. For example, it will have this scrolling images, okay. There could be sound, there could be photographs, and so on. So please understand one thing, in 1992, the web pages did not look like these, okay. They were quite boring. So the green project team ne kya kiya, using Oak, they developed web pages. These web pages were called web applets. And these web applets, they kind of brought life to the internet. Because web applets mein graphics the, animation tha, sound tha, and all. So people really started liking the internet because of the web applets. Then in 1994, what the green project team did is they developed a web browser called Hot Java. So this Hot Java, which you see over here, this was a web browser. Now, please answer one question. Web browser is a program or a programming language? Come on, answer the question. It's okay if you're wrong. Come on, tell me. Program. Yes. Web browser is a program. So obviously it is written in some programming language. So take a guess, this web browser Hot Java was written in which programming language? It was written in which programming language? Tell me. Come on, take a guess. Hot Java was written in which programming language? See, on this screen, you see name of only one programming language. Which one is that? Oak. Okay. So Hot Java was written in Oak. In fact, the web applets were also written in Oak. Okay. I see somebody, putting the answers on the chat. So don't put the answers on the chat. Okay. Unmute yourself and give me the answer. Anyway, so what I was telling you is this Hot Java, this web applets, they were all coded in Oak. Now, this Hot Java was a web browser and it became a runaway success. People started liking it a lot. Okay. So some of you will wonder ke web browser mein aisa kya hai ke log itne iske diwane ho gaye, people started liking it a lot. So please understand, we are talking about a time when you guys were not even born. Okay, it is almost like 25 years back. Okay, so that time the web browsers were not as advanced as they are today, but Hot Java had many features in it because of which it became an overnight star. Now, after the success of web applets and Hot Java, this green project team, it thought of something. Now, what it thought, so listen to me very, very, very carefully. Okay, listen to me very carefully. Okay, ये green project team ने क्या सोचा? इन्होंने ऐसा सोचा कि ये जो Oak programming language है, Oak programming language, please be attentive. ये जो Oak programming language है,
इसमें दो फीचर्स ऐसा है जिसके वजह से it will become very popular on the internet. I repeat, the green project team thought that oak had two features because of which it will become immensely popular on the internet. Now, which two features? So one of those two features is platform independence and one more feature is bytecode, जो हम next lecture में discuss करेंगे. Anyway, so green project team ने क्या सोचा कि ये ओक में दो फीचर्स ऐसा है जिसके वजह से it will become immensely popular on the internet. Now with that thought in their mind, इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि यार now let's make it big, कुछ बड़ा करते हैं. ये जो है ना सॉफ्टवेयर फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसको सब छोड़ो, इसको सबको मरने दो. ओके, अभी लेट्स टर्न अवर अटेंशन टू द इंटरनेट. With that thought in their minds, what they did is in 1990, just a minute, guys. Yeah, so with that thought in their minds, what they did is in 1995, okay, they renamed Oak. And now can you take a guess? Oak was renamed as what? Come on, take a guess. Oak. Yes. So in 1995, Oak was renamed as Java. Oak was renamed as Java. All right. And since 1995, I repeat, since 1995, Java became the most prominent language, okay, which is used at the back end of the internet. Now when I say back end, एकदम फटाफट तुमको बता देता हूँ. क्या होता है ना कि जब हम इंटरनेट सर्फ करते हैं तो एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड. योर कंप्यूटर इज द फ्रंट एंड जिसपे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट रन करता है. And back end is basically the server where all the logical operations are done. Okay, so since 1995, Java became a preferred choice, okay, for the programs which run on the server if you are on the internet. All right. And in 1996, the Sun Microsystems, what they did is they released the first official version of Java, which is called JDK 1.0. I repeat, in 1996, they released the first official versions of Java, which is called JDK 1.0. JDK का full form है Java Development Kit. And now since 1996, Java is called language of the internet. अभी why Java is called language of the internet, ये मैं तुमको next lecture में बताऊंगा. For time being खाली इतना समझो कि language of the internet का मतलब क्या है. तो इसका मतलब ये है कि as of today, okay, most of the servers, okay, that means I'm talking about the backend. As of today, most of the servers use Java for all the logical work. तो इंटरनेट पे जब हम काम करते हैं, इंटरनेट पे कोई भी हम वेबसाइट सर्फ करते हैं, तो उस वेबसाइट का जो बैकएंड होता है, जो सर्वर पे रहता है, वो पूरा बैकएंड जावा में कोडेड होता है. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट. दैट मींस ऑन द इंटरनेट Java is used on a phenomenal scale. ऐसा इसका मतलब है. All right. So this was the history of Java. So Java was originally invented for this purpose. All right. But eventually it became a hero. It became a superstar. It became the language of the internet. All right. Now before we proceed further, any doubts? Anybody has any doubts? Feel free to ask any doubts. All right. So now you must have written 1.1 history of Java. अब ये सब तुम्हारे printed notes में है. I mean the e-notes which I'm going to give you. So over here you just said refer PN. Come on, right? Refer PN3. So over here, PN stands for printed notes. Okay, obviously now they're not printed, but we still call them printed notes. And 3 is the page number. By the way, I have already provided you with the notes of the first lecture. All right. So see, these are the notes of the first lecture.
And over here, see on page number 3, this is page number 3. Here in this table, you will see the same history. You will see the brief history of Java. Okay. All right. Now, after understanding the brief history, now let's start with programming. So in your notebook, give the heading 1.2, creating and implementing a Java program. And under that, give a subheading, structure of a typical Java program. So come on, give these headings. By the way, whatever lectures I'm taking, all the lectures will be recorded. So in case you ever miss a lecture, or in case you don't understand a lecture properly, you can again watch it in the offline mode. However, these lectures will not be on YouTube. Okay, they will be shared via special software which will work only on your machine. It will work only on one particular machine. Okay, now let's start with Java programming. So let's write a very small, very simple Java program. So what you see in red color, I repeat, the red color, the entire red color is our first Java program. Now, what I want you to do is, I want you to copy this program. Okay, so copy the entire red color as it is. Now, when you're copying this red color, pay attention to few things. If you remember, I had told you that the syntax of Java is not so simple. It is long, it is difficult, which you'll realize now. First of all, when you're copying this, see to it that is E is in uppercase. Why? That I'll tell you. Okay, uppercase means capital. Similarly, this S should also be in uppercase. This S should also be in uppercase. Okay. Now, when you're writing this line, see to it that it starts and ends on the same physical line. Okay, so you should not write it this way. You should not write it this way. Execution starts here. So if you write something like this, this is wrong. Why this is wrong? You will realize this very soon. Okay. So anyway, copy the entire red color and then I'll explain you. So I give you 2 minutes for this. Come on, start writing. Start copying. Come on.
Okay, few more seconds. Sorry. All right. Okay. Now, let's start with this program. Okay. First of all, let's talk about the statements which are in slash star and star slash. And let's talk about this statement which is starting with 2 forward slashes. So this thing which you see over here and this thing which you see over here, this is called a comment. Now, I'm pretty sure you know what is a comment, but still very quickly, I'll tell you. A comment is a statement which in reality is not a part of the program. So what happens is the comments are simply ignored by the compiler. It is simply ignored by the Java software, by the Java program. Okay. The comments are not meant for the Java compiler. By the way, in case you don't know what is a compiler, I'll tell you that in the next lecture. All right, for time being, just understand a compiler is something which will take the program and will show you the output. Okay. Okay. Anyway, so coming back to the comment. So a comment is something which is not for the compiler. It is meant for the reader of the program. I repeat, reader of the program. So for example, this comment tells you this is the first Java program. The output of this program will be welcome to Java. This comment tells you that execution starts here. Now what happens is that in C language, you can write a comment only in one style. One style means that you start with slash star, you write as many lines as you want, and you end with star slash. So this style is still used in Java. I mean, it is allowed in Java. But in Java, comments can be written in one more style. That means you put 2 forward slashes, and then whatever you write to the right of this line, okay, whatever you write to the right of these 2 forward slashes, those words are treated as comment. So look carefully, if I'm putting 2 forward slashes here, then this part is treated as a comment, but this part is not treated as a comment. Okay, it is still very much a part of the program. Okay, so that is why I told you don't take any word on the next line. All right. So I hope you understood what comments are. Comments are basically meant for explaining the logic of the program. And in Java, you can give the comments in 2 styles. So one is just a minute. So in Java, you can give comments in 2 styles. So one is this multi-line comment, and another is this, just a minute, guys, just a minute. Okay, so one is this multi-line comment, sorry. Okay. All right, so what I was saying is in Java, you can give comments in 2 ways. So this is the multi-line comment, and this is the single line comment. Okay, pretty simple. Now let's come to the main logic. So listen to this very, very, very carefully now. Now what happens is in Java program, everything is enclosed in a class, even the main. Okay, so in Java, you'll always start the class. So you will always start the keyword class. This is a keyword which should be written compulsorily in lowercase, followed by the class name. Now over here, the name of the class is example, and see this E is in uppercase. Now giving the E in uppercase, it is not a rule, it is a convention. Convention means it is a tradition, it is not a rule. You could have given this E in lowercase also, but it is a convention to give the class name in uppercase. It is a convention to start the class name in uppercase. So when you start with the class, you will write the keyword class, the name of the class, then you will have opening brace and you will have closing brace, and everything will come inside these 2 braces, even the main. Now look at this first line of the main, public static void main string args. Now what is the meaning of public static? That I will teach you in chapter number 4. Okay.
What is the meaning of string arcs? String arcs that I will teach you in detail very soon, today only in detail very soon. For time being, please look at this void main and you will realize this is similar to the void main of C language. So void main, or I will say this main, it is basically a function, and execution of the program always starts in main. By the way, inside a class, you can write any number of functions, of which main is also a function. No matter how many functions you write inside the class, the execution will always start at main. Now tell me, जो C language का main होता है, उसमें हम इधर क्या लिखते हैं? Come on, unmute and answer. Braces. नहीं, इधर. See where my mouse pointer is moving here. इधर हम क्या लिखते हैं? इधर कुछ नहीं. इसका मतलब, वेरी गुड, इसका मतलब जो C लैंग्वेज का मेन होता है ना, इट डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स, इट डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स. But the main of Java, it takes one parameter, one argument called args, and this args is an array of strings. I repeat, the main of Java takes one argument called args, which is an array of strings. Now you may ask me, what is the meaning of array of strings? So ये सब मैं तुमको explain करूँगा in detail after maybe half an hour in detail, and this is going to be quite interesting. But timing details बाद में. One small simple thing is, हो सकता है कि तुम्हारे कॉलेज में args के बदले में they simply write a. Okay, so that is okay. You can write anything over here. This is simply a name. If you want, you write your own name. It is okay. Moreover, just square brackets say you can put it even after the word string. That is also okay. That is also correct. We'll come to know about this when we study the chapter of arrays. Anyway, now the main starts over here at this brace and it ends over here at this brace. Basically, it is a function. Basically, it is same as main of C language. Okay. So the execution starts at main, and in the main we have written one statement, system.out.println. आज के बाद बहुत बार इसको हम इन शॉर्ट बोलेंगे SOP statement. SOP. Now the SOP statement of Java is same as printf of C. इसका मतलब क्या? तुम डबल कोट्स में जो भी लिखोगे, it will be displayed as it is on the monitor. So this SOP will display on the monitor. Welcome to Java. All right. By the way, oral exams में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछते हैं. Listen to me very carefully. ओरल एग्जाम पूछते हैं कि ये सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है. तो रिमेंबर वन थिंग, दिस सिस्टम इज द नेम ऑफ अ क्लास, प्री डिफाइंड क्लास. आउट इज एन ऑब्जेक्ट, प्रिंटलन इज अ मेथड. बाय द वे, मेथड मतलब फंक्शन. मेथड क्यों बोल रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे. सो रिमेंबर, सिस्टम इज द नेम ऑफ अ क्लास, आउट इज द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आउट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट, एंड प्रिंटलन इज अ मेथड. बाय द वे, चलो एक बात अभी बता देता हूं. आज के बाद जावा में हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है ना, फंक्शन, उसको हम बोलेंगे मेथड. सो टुडे ऑनवर्ड्स व्हेनेवर आई यूज द वर्ड मेथड, दिस मेथड इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज. ओके, सो नाउ ऑनवर्ड्स आई विल से दिस मेन इज अ मेथड. ओके, सो println, this println is similarly a method, it is similarly a function. Finally, just like C language, most of the statements in Java end with semicolon. Not all, but most of the statements end with semicolon. So this was a brief introduction of the Java program. Now there is one thing which I want to tell you over here, and you should be very much aware about this. Okay, otherwise what will happen is you will repent big time. ध्यान से सुनना. होगा क्या ना, in the beginning of the Java syllabus, okay, whether you are attending my course or whether you are attending in your college, in the beginning of the Java syllabus क्या होगा ना, तुमको ऐसा लगेगा कि अरे Java is almost same as C language. For example, if you see these printed notes, okay, तो देखो ये, okay, sorry, the chapter number 2 नहीं है. So in your printed notes, see chapter number 2, see the name of chapter number 2, fundamentals of Java, Java operators, control statements. See chapter number 3, naming conventions, data input and arrays. तो होगा क्या ना, till chapter number 3, I repeat, till chapter number 3, Java will appear similar to C language. So what will happen, by the time you reach chapter number 3, you will become overconfident. तुमको लगेगा अरे Java तो एकदम simple है. But what you're studying till chapter number 3, that is not real Java. Real Java starts with chapter number 4, which is called classes and objects. And chapter number 4 onwards,
everything will be new for you. Okay, everything will be Greek and Latin for you. And if you're not attentive that time, then you will have a tough time in Java. So chapter 4 onwards, जो भी तुम देखोगे, देखो तुमको ये सब नया टॉपिक्स दिखेगा, जैसे क्लासेस ऑब्जेक्ट, वेक्टर्स, इनहेरिटेंस, इंटरफेसेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, पैकेजेस, मल्टी-थ्रेडिंग, स्विंग्स, JDBC, all these things are new for you. So please understand, real Java starts from chapter number 4. इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर 1, 2, 3 में हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, खाली ये बात है कि चैप्टर 1, 2, 3 में जो हम करेंगे वो एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, जस्ट सिमिलर टू सी लैंग्वेज. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, जावा is a superset of C language, so it will contain features which are already there in C language. Okay, remember that. Anyway, so now what you do is you copy everything which you see in blue color over here. Come on, I'll give you 2 minutes, copy the blue color. If you have any doubts, you can ask me doubts if you wish to. Sorry. All right, so let's move ahead. By the way, अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे ये देख के रखो कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, because many a times you may not get time for copying everything, so that time you can take a quick screenshot. And एक बात याद रखो, जब भी तुम स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो बाद में लेक्चर के बाद सी टू इट के वो स्क्रीनशॉट में जो भी है वो तुम अपने नोटबुक में कॉपी कर लो. Why? Because at the end of the semester, everything should be there in your notebook. It will be very difficult for you to search all the screenshots in your computer. So if everything is there in your notebook, it will be easier for you. Okay. All right. Now let's do all these things practically. Now for the next half an hour, whatever I'm going to teach you, okay, it is very important and it is something which you will need it quite often. So I'm going to teach you how to download Java, how to install Java, how to run the Java programs. अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो पूरे सेमेस्टर में तुमको छोटा छोटा डाउट्स आएगा. ओके, सो प्लीज बी अटेंटिव. Sorry for that. Sorry. Okay, so let's start with downloading and installation of Java. Now सबसे पहले you'll open some browser. So I have this browser called Brave browser. If you're using Google Chrome, I advise you use the Brave browser. If you're using the Brave browser, it has many features, but एक feature ये है कि if you're using the Brave browser, you get free cryptocurrency. There is a cryptocurrency called BAT, BAT, that is Basic Attention Token. So only by using this browser, ये तुमको free में मिलता है. All right. Anyway, I hope you know what is cryptocurrency. I suggest that instead of spending your time on Instagram or WhatsApp, you should learn these things also. What is cryptocurrency? How do you invest in crypto, in stocks, and all these things? It will really help you in life. Anyone who is aware of stocks, cryptos, and actively, anybody out of you? All right, so do take your time. Okay, learn these things in life. They will also help you a lot and they will help you make good money in life. Okay, anyway, so now if you want any advice about cryptocurrency, you can ask me personally. Even I can help you with that. Anyway, now moving on with Java. So सबसे पहले let's go to our Google and all right, अब इधर जाके
मैं सबसे पहले टाइप करूंगा Java 8 डाउनलोड. All right, now listen to me very, very, very carefully. Okay, why? Because if you don't listen to me carefully, some teachers, some stupid teachers, okay, I say stupid, okay, very boldly, very bluntly, they will tell you a few things which are not correct, which are not accurate, which and they will tell you these things because they don't have enough knowledge about Java. So listen to me carefully. Now, throughout our syllabus, we'll be using the most recent version of Java, which is Java 16. And Java 16 was released in March 2021. Okay, so we'll be using Java 16 in our entire syllabus. But first, we'll be downloading Java 8 and then we'll be downloading Java 16. Okay. Now, the question is, why are we downloading Java 8? So what happens is, in your syllabus, there is a chapter called applets. If you see the table of contents, you will see there is a chapter called applets. Okay. So what happens is, applets was discontinued after Java 8. So if you have Java 16 on your computer, in fact, Java 10, 11, 12, anything after Java 8, any version of Java after Java 8 is not capable of running applets. Okay. So only for running applets, we are downloading this Java 8 version. All right. So Java 8 is only for applets and then Java 16 for the remaining syllabus. आप कोई टीचर्स क्या बोलेंगे तुमको, वो बोलेंगे अरे संदीप सर जावा 8 करा रहा है. ओके, जावा 8 तो पुराना है, दिस इज ऑल ओल्ड स्टफ. बट दीस फूल्स दे डोंट नो कि तुम्हारे सिलेबस में एप्लेट्स भी है एंड एप्लेट्स के लिए तुमको जावा 8 चाहिए, वो जावा 16 में काम नहीं करेगा. अनदर थिंग इज के इतना तो समझ में आ गया होगा कि यू नीड जावा 8 एज वेल एज जावा 16. सो अनदर थिंग इज कि अगर तुमको दोनों चीज अपने कंप्यूटर पे चाहिए तो यू शुड कंपल्सरली फर्स्ट डाउनलोड जावा 8 एंड देन जावा 16. अगर तुम वाइस वर्सा करोगे तो वो काम नहीं करेगा. वंस यू इंस्टॉल जावा 16 then Java 16 will not allow you to install Java 8. All right, so let's first download and install Java 8. So see, this is the site of oracle.com. By the way, Java was invented by Sun Microsystems, but later on Sun Microsystems was acquired by Oracle, and now Java is the proprietary product of Oracle. So we go to Oracle website, the very first link. Okay, now in this very first link तुम नीचे जाओ और नीचे जाके ना देखो तुमको दो सेक्शंस मिलेंगे. एक होगा ये जावा एससी डेवलपमेंट किट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है जेडीके. और एंड देन ओवर हियर यू विल सी 8U301. so 8 is basically the version number. So basically this is JDK 8. U का इधर मतलब है अपडेट. So this is update number 301. अभी अपडेट नंबर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. Basically whenever Oracle releases a Java version, after releasing the Java version at every interval of 2 days, 3 days, 4 days, it will release an update. Okay, so basically this is update number 301 and that does not make any difference. This 8 is important. अब नीचे ना इधर एक और सेक्शन है जहां लिखा हुआ है JDK 8 डेमोज एंड सैंपल्स. तो गलती से ना यहां से कुछ डाउनलोड नहीं करना. वी डोंट नीड दिस सेक्शन. ओके, वी नीड दिस सेक्शन JDK 8U301. Now in this section what you need to do is you need to download Java according to your machine. So most of you will have Windows, but if you have the MacBook, so for MacBook you need to download this version. All right, this one. Now if you have Windows operating system, तो खाली एक बात पे ध्यान देना, be very attentive. Now Windows के लिए you will see two different installers over here. One is this Windows x64 and one is this Windows x86. Now listen to me very carefully. If you have Windows 10, Windows 8, Windows 7 64-bit, so then you need to download this. See what happens is Windows 7, I repeat, Windows 7 comes in two versions. Windows 7 comes in two versions. Version 1 is 32-bit, version 2 is 64-bit. So if you have Windows 7 64-bit, then download this. If you have Windows 8 and Windows 10 खाली 64-bit में ही होता है, तो उसके लिए blindly ये download कर. ठीक है? And if you have Windows 7 32-bit, तो फिर तुमको ये download करना है. All right.
So first of all, you check which operating system you have. If you have Windows 8, Windows 10, ये कर लो. If you have Windows 7, तो तुमको वो सिस्टम सेटिंग्स में जाके कंट्रोल पैनल में जाके देखना पड़ेगा कि तुम्हारा Windows 7 कौन से बिट का है, 32 या 64. 32 है तो ये डाउनलोड करो, 64 है तो ये करो. Anyway, now I will click on this. I'll click on this, and the download will start. But one more thing. अच्छा, when I click on this, ये देखो. When I click on this, okay, first of all, ये tick mark मुझे मारना पड़ेगा, okay, license and all. But there's one more thing. Now, what one more thing? Listen to me carefully. अभी ये देखो, मैं ये download पे click करने वाला हूँ. Now I'll click on this. Now, when I click on this, it will ask me to log into Oracle. Okay. अब मेरे पास already Oracle का account है. Okay. So I will just give my credentials over here. So Sandeep, that's my mobile number at gmail.com, and I give the password. All right. Now I'm about to click on sign in over here. Now I'm pretty sure that you will not have an Oracle account, so no problem. क्या होगा तुम्हारे सामने जब ये वाला स्क्रीन आएगा, when you have this screen in front of you, तुम नीचे देखो, नीचे आएगा create account. Okay, so जैसे हम email का account create करते हैं, वैसे Oracle का account create करो. जैसे account create हो जाएगा, तुम्हारा download start हो जाएगा. Okay, so now I already have the account and now I signed in. I hope the password is correct. All right. So now see, it is telling me where it should be downloaded. So this is my downloads folder. समझो मैं बोलता हूँ save. So when I say save, ये देखो नीचे मेरा download start हो चुका है. All right, ये 169 MB का file है. Okay, which will take approximately 10-15 seconds depending on how fast your internet is. All right. So the download has started. It is about to end. All right. अब एक बार ये डाउनलोड हो गया, उसके बाद इसको एक्सेस कैसे करना है तुमको पता होगा. यू कैन ईदर गो टू डाउनलोड्स फोल्डर. तो ये देखो, ये तुम्हारा डाउनलोड्स फोल्डर है. ओके, वेयर इज इट? दिस वन. सो इन द डाउनलोड्स फोल्डर तुमको ये सबसे पहले इधर दिखाई देगा ये. सो यू कैन क्लिक ओवर हियर. और अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो सिंपली तुम क्या करो. ऑल राइट, ऑल राइट. सो okay, so this is your downloads folder. So if you don't want to come over here, तो नीचे जो तुमको दिखाई दिया था उधर भी directly click करोगे तो the installation will start. Anyway, so now I have come inside the downloads folder. Okay, now I'll click on this. So देखो, I'll click on this. All right, so when I click on this, it will ask me, do you want this app to make changes? Obviously, I'll say yes. All right, now it says this version of JDK is already installed, please uninstall. So मेरे में JDK already installed है, तो इसीलिए मुझको बोल रहा है it is already installed. अब तुम्हारे में obviously वो ऐसा नहीं बोलेगा. तुम्हारे में क्या होगा, तुमको स्क्रीन दिखाई देगा where you will just click on next, okay, and you will complete the installation. While doing the installation, do not change the default path. तुमको सिर्फ दो बटन पे क्लिक करना है, next, okay, बस और कुछ नहीं. All right. So once you do that, the installation will be done. Now, how to check whether the installation is done or not? That also I will show you. But now let's go to the Brave browser. इसको बोलते हैं Brave. ये browser का नाम है Brave. Okay. Now let's again go to Google. All right. And here now I'll type Java. अच्छा, by the way, I hope you understand that Java 8 is now already installed. तो उसको install करने के बाद अब तुम वापस इधर आओ. And now you type Java 16 down. So again, you will see this link, the very first link. Okay, go to the very first link. And same thing, उसमें नीचे जाओ. इस बार तुमको एक ही सेक्शन दिखेगा, तुमको दो सेक्शन नहीं दिखेंगे. So see, this is JDK 16. Okay,
यहाँ तुमको अपडेट नहीं दिख रहा है बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन, तो अपडेट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। एनीवे, सो दिस इज JDK 16। अब इधर नीचे जाओ और इधर तुमको ये दिखाई देगा विंडोज x64 इंस्टॉलर। बाय द वे, द JDK 16 version of Java, it is available only for 64-bit operating systems. So this will not work on Windows 7 32-bit. It will work on Windows 8, it will work on Windows 10, it will work on Windows 7 if it is 64-bit. Okay. Anyway, so now you need to download this second last one. So again, click on this. All right. Again, accept it. This time you don't need to log in because you're already logged in by now. So it will directly ask you, click on save. Again, a few seconds. Now what I was telling you is तुमको downloads folder तक जाने की जरूरत नहीं है, एक बार download हो गया ना, you can directly click here. So see, now look at the bottom left of my screen. I am directly clicking here. So when I click here, the installation will start. All right, now again the same thing. I will say yes. Okay, when I say yes, okay, the installation will start. Again, as I told you, you just need to click on okay, 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 next, next, next. Okay, all right. So over here, again, it is telling me the software has already been installed. So would you like to reinstall it? So I will say no. I will say no. All right. So please pay attention to one thing, that you need to install first Java 8 and then Java 16. Okay. Do not change the standard path. Let it get installed on its standard path. अच्छा, अब पता कैसे करें कि सच में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं? तो इसके लिए तुम क्या करो, सी ड्राइव में जाओ। ये देखो, ये है सी ड्राइव। सी ड्राइव में जाके ओके, गो टू प्रोग्राम फाइल्स। ये देखो, ये है प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स में तुमको एक फोल्डर दिखाई देगा जावा। सो इफ इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल, यू विल सी दिस फोल्डर, अदरवाइज यू विल नॉट सी दिस फोल्डर। ऑलराइट, एंड नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन जावा, थोड़ा ध्यान से देखो, तुमको ये दो फोल्डर्स दिखाई देंगे विच आर ऑफ जावा 8. द फर्स्ट एंड द थर्ड फोल्डर आर ऑफ जावा 8 एंड द सेकेंड फोल्डर इज ऑफ जावा 16. सम ऑफ यू में आस्क मी कि जावा 16 के लिए ये वाला फोल्डर क्यों नहीं बनता है? सो लेट्स नॉट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। बेसिकली 3 ही फोल्डर होगा। जेडीके 8 का 2 फोल्डर होगा। यहाँ तुमको जो 1.8 दिख रहा है तो उसका मतलब है जेडीके 8। ओके, तो उसका 2 फोल्डर होगा, पहला और तीसरा, एंड जेडीके 16 का एक ही फोल्डर होगा, ये दिस वन। ऑलराइट, राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन जेडीके 16। जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ एप्लेट्स के लिए हम जेडीके 8 यूज करेंगे। एप्लेट्स इज द लास्ट चैप्टर, तो वो बाद में देखेंगे। सो नाउ लेट मी गो इनसाइड जेडीके 16। तो उसमें तुमको ये सब फोल्डर्स दिखेंगे। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है वो होता है bin. So by default what we do is, by default we store all the programs in bin. We can store it elsewhere also, but by default we should store all the Java programs in bin. Okay, अच्छा, अब इसको ऐसे ही रखते हैं। All right, so till here you understood how to install Java on your computer. Now what I will do is, now I will show you how to do editing, compiling and executing of the Java program. Now first of all, obviously I'll teach you editing. तो editing का मतलब क्या है? editing का मतलब प्रोग्राम को क्रिएट करना, कटिंग, पेस्टिंग, टाइपिंग, इसको बोलते हैं editing. So please pay good attention, otherwise you will have doubts throughout your entire semester. Okay, all right, please be attentive. Things are slightly tricky over here. Okay, abhi when I go inside bin, what I can do is, okay, I will right click over here. If you want, you can quickly write these things in your notebook also. You can scribble in your notebook. थोड़ा कुछ मैं भी, whatever I'm going to teach you, it is slightly confusing. So when you are inside bin, okay, you will right click. तो देखो मैं right click कर रहा हूँ। अब right click करके ना मैं new पे जाऊँगा, new पे। अब जब मैं new पे जा रहा हूँ ना, देखो मुझको ये सब options दिख रहे हैं, ये सब, okay, all right. So over here I need this option of text document. Now why I need the option of text document, वो बाद में देखेंगे। Anyway, अब एक काम करते हैं, हम कोई दूसरे फोल्डर में जाते हैं। So once again I go to C drive,
All right, I go to program files and I go to, again, let's say Java. I go to JDK16. Is bar, let's do one thing. Instead of going to bin, let's say I'm here and let's say now I do right click over here. Okay, now see, I do right click. I'm inside JDK16 folder. I'm not inside bin, and I click on new. Now, if you are attentive, tell me what is different over here. Come on, unmute yourself and tell me what is different. Come on, tell me. It's okay if you are giving a wrong answer. Come on, let's keep the class interactive. Tell me what is the problem over here. Now, if you're paying attention, you will realize कि जो new का जो section है ना, इसमें मुझको सिर्फ folder create करने दे रहा है, ये मुझको कोई file create नहीं करने दे रहा है. ध्यान से देखो, जबकि मैं जब bin में गया था, देखो ये bin था, ओके, तो इसमें it is allowing me to create these files also. अब होगा क्या तुम्हारे कंप्यूटर में, प्लीज ध्यान से सुनना, तुम्हारे कंप्यूटर में जब तुम फर्स्ट टाइम ये सब करोगे, जब तुम पहली बार bin के अंदर जाओगे, तो bin के अंदर तुम्हारे कंप्यूटर में तुमको फोल्डर ही क्रिएट करने देगा. ओके, मेरे को क्यों वो फाइल क्रिएट करने दे रहा है? क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज किया है इसीलिए. बट इन योर कंप्यूटर व्हेन यू गो इनसाइड bin, it will show you this thing which you see right now on the screen. So now the question is what to do over here. So please be attentive क्योंकि ये doubts बहुत लोग को आता है. अब ये जो प्रॉब्लम है ना, it has something to do with Windows operating system. It's not a problem. It's basically a security feature of Windows. So this has nothing to do with Java, but obviously it will cause problems in Java. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? So listen. अभी let's say this is the JDK folder ना. I'm inside JDK. And JDK के अंदर it is not allowing you. It is not allowing you to create a file. It is allowing you to create only a folder. तो मैं क्या करूंगा? मैं अभी एक लेवल ऊपर जाऊंगा. सो देखो, मैं अभी इधर क्लिक करूंगा. नाउ दिस इज द जावा फोल्डर. सी, दिस इज जावा फोल्डर. उसके अंदर ये JDK फोल्डर है. अब मैं क्या करूंगा? इसका ना सिक्योरिटी सेटिंग्स चेंज करूंगा. आई विल चेंज द सिक्योरिटी सेटिंग्स ओवर हियर. सो आई विल राइट क्लिक ऑन दिस. आई विल गो टू प्रॉपर्टीज एंड आई विल रिमूव दिस रीड ओनली. ठीक है, एंड देन आई विल अप्लाई. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इतना, ओके, इट विल टेल मी यू विल नीड टू प्रोवाइड, सो आई विल से कंटिन्यू. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इतना करके ये लोग ओके कर देंगे. ओके, बट दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट इनफ. अब क्या करो? अब तुम सिक्योरिटी में जाओ. ओके, नाउ बी अटेंटिव. अब सिक्योरिटी में जाके तुम्हें क्या करना है? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. Here you will see several things like see all packages, all restricted, okay, creator, owner, all these things you will see. Okay, so now first of all you'll click on edit. Now see carefully what I'm doing. Things are difficult. I'll click on edit. Now after clicking on edit, ऐसा फिर से एक similar एक ऐसा screen खुलेगा जहां तुम editing कर पाओगे. अब तुम क्या करो? पहले इसको select करो, all application packages, and नीचे जो full control है ना, इसको tick mark करो. All right, and click on apply. Okay, now do this thing for everybody. Everybody का मतलब, अब ये देखो, ये second है, all restricted application packages. इसको click करो, इसको, ये देखो, देखो फिर से इसका देखो full control enable नहीं है. See carefully. So enable it, apply it. Now do this for everybody. So ये देखो, creator, owner, okay, allow, apply. ओके, सिस्टम इसमें पहले से रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते तुम. ऑलराइट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसको भी पहले से है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है. यूजर्स, तो ये देखो, अलाउ, अप्लाई. ऑलराइट, एंड वंस अगेन ट्रस्टेड इंस्टॉलर, ओके, अलाउ, अलाउ, ऑलराइट, अलाउ एंड अप्लाई. ऐसे. सो बेसिकली तुमको क्या करना है? हर एक कैटेगरी में जाके तुमको उस कैटेगरी को फुल कंट्रोल दे देना है, फुल कंट्रोल देना है. एंड देन यू फाइनली क्लिक ऑन ओके ओवर हियर. ओके, एंड क्लिक ऑन ओके ओवर हियर. ऑलराइट, नाउ लेट मी गो इनसाइड JDK जिसका सेटिंग्स मैंने चेंज किया था. ठीक है, तो अब मैं JDK के अंदर जाता हूं. अभी आई विल डू राइट क्लिक एंड नाउ सी आई विल क्लिक ऑन न्यू. सी व्हाट विल हैपन. सो नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन न्यू, यू विल सी द ऑप्शंस फॉर that text document and everything else. Okay, so this is something which you need to do before you start editing. All right, I hope you understood this. Any doubts still here? Any doubts? All right, ठीक है.
अभी मैं बिन के अंदर जाता हूं, बिन के अंदर जाके ये देखो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा एंड आई क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट, सो आई क्लिक ऑन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये देखो ऊपर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया। ऑलराइट, अभी मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा। दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज नॉट अ जावा फाइल। अब मैं इसको ओपन करूंगा। अब ओपन करने के बाद देखो मैं क्या करने वाला हूं, बी अटेंटिव। आई क्लिक ऑन फाइल, आई क्लिक ऑन सेव एज, सेव एज। ओके, आई क्लिक ऑन सेव एज। सो सेव एज जब हम करते हैं तो एक और विंडो ओपन होता है, एक और विंडो ओपन होता है। ओके, नाउ ओवर हियर सी इन सेव एज आई विल गिव इट अ न्यू नेम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो प्रोग्राम तुमने नोटबुक में कॉपी किया है ना, वो प्रोग्राम हम इधर करके देखेंगे। बाय द वे, कम ऑन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, उस प्रोग्राम में क्लास का नाम क्या था? टेल मी। Example. So in Java, the file name and the class name must be exactly same. इसका मतलब जिस फाइल में तुम प्रोग्राम को स्टोर कर रहे हो, उस प्रोग्राम का फाइल नेम और क्लास नेम दोनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ओके, इनफैक्ट वो जो ई है ना, वो भी अपर केस में होना चाहिए, लोअर केस नहीं होना चाहिए। सो आई राइट एग्जाम्पल, एक्सटेंशन में मैं लिखूंगा डॉट जावा। ओके, so the file name is example और उसका extension है .java, obviously .java, why not anything else, that is obvious। और नीचे मैं ना इसको कर दूंगा all files। ओके, अब मैं इसको सेव करूंगा। अब जब मैं इसको सेव करूंगा, कीप एन आई ओवर हियर, सी माय माउस पॉइंटर, इधर भी देखते रहो, देखो क्या होगा। सो आई सेव, सो व्हेन आई सेव दिस, देखो एक नया फाइल इधर बन गया एग्जाम्पल, एंड ये टाइप में देखो इसका नाम अब जावा फाइल है, जावा फाइल। बाय द वे, अब तुम चाहो तो ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दो, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ऑलराइट, सो इसको अब मैं डिलीट कर दिया। ऑलराइट, सो यू अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट अ जावा फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूजिंग नोटपैड, उसको सेव एज करके एक जावा फाइल बना दो। अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली नोटपैड खुल जाएगा। अच्छा, अब होता क्या है ना, अब मैं करने वाला हूँ एडिटिंग का मतलब टाइपिंग, कटिंग, पेस्टिंग, वो सब। Now you can use any software for editing. You can use Notepad++, you can use NetBeans, you can use this, that, whatever, Visual Studio, जो चाहिए वो यूज करो। बट मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीफ है कि इन द बिगिनिंग यू शुड ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल। क्यों? क्योंकि बिगिनिंग में ना तुम्हारा पूरा फोकस ना जावा पे होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर एडिटर पे नहीं होना चाहिए, विजुअल स्टूडियो के एंट्री केसेस पे नहीं होना चाहिए। So that is why I am purposely using Notepad, although you can use anything else. Okay, so अभी मैंने Notepad यूज किया है, Notepad यूज करके मैंने जावा फाइल को ओपन किया है। Okay, now this is the place where I will type the program. So see, I'll type the program class example. All right, then public static void main। ओके, इसके अंदर स्ट्रिंग आर्क्स, अभी उधर आर्क्स के बदले अगर मैं चाहूं तो ए भी लिखूं चलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ऑलराइट, देन अगेन ओपनिंग ब्रेस, एंड नाउ आई राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट println, एंड इन डबल कोट्स मैं लिखूंगा वेलकम टू, खाली इतना लिखूंगा। All right, and now I'll copy paste this SOP system.out.println, and here I will write one more statement, although it was not there in your program। क्यों एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं तुमको समझेगा बाद में, जाओ। And now I'll close the main method means function, and I'll close the class। Okay, those who have done C++ earlier, तुमको इधर सेमीकोलन डालने की आदत होगी, तो सेमीकोलन जावा में नहीं आता है, C++ में आता है। ओके, एनीवे, नाउ द एडिटिंग इज ओवर। एडिटिंग का मतलब टाइपिंग, कटिंग, पेस्टिंग, सेविंग, वो सब हो गया, एडिटिंग इज ओवर। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ओके, सो आई सेव दिस। ऑलराइट, अभी ध्यान देना, इस फोल्डर में अभी तक इधर एक ही फाइल है, ये है example.java, इसका नाम है example.java। ओके, बाय द वे, ये जो प्रोग्राम मैंने टाइप किया है ना, इसको कभी कभी बोलते हैं सोर्स कोड। एवरी प्रोग्राम which you are typing is called source code, whether it is in C, Java, Python, उसको बोलते हैं source code। All right, so the source code is typed। Okay, अच्छा, now what next? Now what happens is, listen to me carefully,
ये जो प्रोग्राम हमने टाइप किया है ना, दिस प्रोग्राम आई कांट अंडरस्टैंड, यू कांट, आई एम सॉरी, दिस प्रोग्राम आई कैन अंडरस्टैंड, you can understand, but not the computer. So if you were my students of C language last semester, तो हमने लास्ट सेमेस्टर सीखा था कि कंप्यूटर को ना सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आता है, दैट मींस द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को वंस और जीरोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब कैसे, तो ध्यान से सुनो। जावा में क्या होता है ना, जावा में क्या होता है, आफ्टर एडिटिंग you need to follow two steps। तो एक स्टेप होता है कंपाइलिंग, और दूसरा स्टेप होता है एग्जीक्यूटिंग, या फिर उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग। ओके, अब ये सुनने में डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज वेरी सिंपल। सो जस्ट पे अटेंशन टू दीज टू स्टेप्स एंड वील डिस्कस दीज टू स्टेप्स इन ग्रेट डिटेल नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीक। ओके, अच्छा, तो अभी ये कंपाइलिंग क्या है, ये इंटरप्रेटिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, अभी इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। सो इन माय कंप्यूटर आई हैव केप्ट द कमांड प्रॉम्प्ट ओवर हियर, सी ओवर हियर, बट तुम्हारे कंप्यूटर में इधर नहीं होगा। तो तुम क्या करो, सर्च में जाओ और सर्च में जाके ऐसा cmd टाइप करो। तो cmd टाइप करोगे तो इधर कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। बाय द वे, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट यू डू इज यू राइट क्लिक दिस। तो जब राइट क्लिक करोगे ना, तो ये ऑप्शन आएगा। तो तुमको इधर दिखाई देगा पिन टू टास्क बार, तुमको दिखाई देगा पिन टू टास्क बार। तो तुम उसको पिन कर लो, तो उसके बाद से वो इधर दिखाई देगा नीचे। एनीवे, राइट नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट क्लिक दिस। सो व्हेन आई क्लिक दिस, दिस ब्लैक कलर विंडो ओपन्स, एंड शायद तुमको पता होगा कि जो ब्लैक कलर विंडो है, इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, सो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर आई विल, one minute. So this is the place from where I am going to execute, I am going to compile my Java program. Okay, so I hope you can see everything clearly. If you cannot, do let me know. ठीक है, अभी कंपाइलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू चेंज द पाथ ओवर हियर। अब पाथ का मतलब क्या, तो देखो ये जो तुमको दिख रहा है ना, C:users HP, so this is called a path। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब currently I am inside a folder called HP, which is inside a folder called users, which is inside C drive। अच्छा, अभी ये जो प्रोग्राम है, ये है ना, देखो बिन फोल्डर में, बिन। अब बिन का पाथ क्या है, तो ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये पूरा बिन का पाथ है। तो इसको तुम ऐसा देख सकते हो, इसको राइट क्लिक करो एंड एडिट एड्रेस में जाओ। सो नाउ ये देखो, जो ब्लू कलर में तुमको हाईलाइटेड दिख रहा है ना, दिस इज द पाथ ऑफ बिन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो प्रोग्राम है एग्जाम्पल, इट इज इनसाइड द फोल्डर बिन, which is inside JDK16, which is inside Java, which is inside program file, which is inside C. Now answer a very simple question. In fact, this is not a question, it's a rhetoric. ये जो bin का path है और ये जो command prompt का path है, they are same or different? Come on, answer the question quickly, fast, करिए। Different। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, दोनों का path सेम करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो मैं ये bin पे राइट क्लिक करूंगा और इधर करूंगा कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट। ओके, तो उसका जो एड्रेस है ना, ये वाला एड्रेस, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। ओके, सो ये देखो, कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट। फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं करूंगा cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। सो बेसिकली आई एम टेलिंग माय ऑपरेटिंग सिस्टम टू चेंज द फोल्डर टू दिस पाथ। अब मैं इधर देखो पेस्ट करने वाला हूं, तो ये पेस्ट हो गया, ये मैंने पेस्ट किया इधर। Now I'll hit the enter key and see what will happen। तो जब मैंने enter की हिट किया, देखो ये पाथ चेंज हो गया। Now look at this path, and look at this path, see it is same। All right, any doubts till here? Any doubts? ठीक है, now I will start the procedure of compilation। So please be attentive। तो कंपाइलिंग के लिए मैं इधर एक कमांड दूंगा और वो कमांड होगा जावा सी। बाय द वे, सी स्टैंड्स फॉर कंपाइलर। एंड नाउ आई विल राइट द नेम ऑफ द फाइल। तो ये जो प्रोग्राम है, ये वाला जो प्रोग्राम है, आई होप यू कैन सी दिस माउस पॉइंटर विच इज इन द शेप ऑफ अ पेन। तो ये जो प्रोग्राम है ना, वो इस फाइल में है जिसका नाम है example.java।
So I'll type the file name example.java. Okay. Now I'm about to hit the enter key. Now when I hit the enter key, तुम क्या करो? अपनी एक आंख इधर रखो. Keep your one eye over here and another eye over here. Okay. देखो क्या होता है. So I hit the enter key. Did I not hit the enter key or just a minute? I think I did not hit the enter key. Let me do it one more time for you guys. So example.java and enter. Just a minute, guys. I don't understand why it is slow. Let me go to the command prompt again. Let's try one more time. Did we miss the file somewhere? Okay, let's go to command prompt one more time. So I go to command prompt again. All right. Now in the command prompt, I do cd and then I paste this path. So I copy this. I copy this and I paste this. Now I type Java C example dot Java. All right. Okay. So listen. Now when I type example dot Java over here, 1 minute. I'll just increase the font size a little so that you can see properly. All right, so I've increased the font size. So over here you can see, look, now when I did a Java C example.java, what I'm doing is I'm invoking the compiler. Now I have told you 2-3 times that we'll be studying the compiler in great detail next lecture. But for time being, what is a compiler? So what happens is when you install Java, two main programs, two main softwares get installed along in your Java system. And those two softwares are compiler and interpreter. So compiler and interpreter, they are basically softwares, they're basically programs. Now the compiler does some activities. What the compiler will do, it will first go through your source code and it will check your source code for errors, whether there are any errors or not. And if there are any errors, it will show you those errors. Okay. So can you tell me what is the error which I have done in this program? Can you tell me? Unmute and tell me. Spelling galat. Yes. So ये देखो, ये जो पब्लिक है ना, इसका स्पेलिंग गलत है, तो ये इधर आया है. अब जब भी तुम कोई जावा प्रोग्राम को चेंज करते हो ना, प्लीज सेव इट एंड रिकम्पाइल इट. तो देखो मैं इसको सेव करूंगा, अब मैं इसको फिर से कंपाइल करूंगा. सो देखो, नाउ आई एम ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट. ओके. अच्छा, अब जैसे कि मैंने बोला, अपनी एक आंख इधर रखना, एक आंख उधर रखना. कीप योर वन आई ओवर हियर. ओके. नाउ आई विल हिट द एंटर की. Come on. What is the problem this time? Just a sec, guys. Okay, let me hit the enter key again. Let's see. Okay, guys, finally. Okay, finally. See, now there are two things which you should observe. सबसे पहली बात ये कि तुमको ये prompt देखो फिर से दिख रहा है. By the way, इसको है ना, इसको prompt, ये जो symbol है ना, ये symbol, इसको prompt बोलते हैं. Okay. So if you see this again, that means the prompt has appeared again. अभी इधर देखो तुमको कोई मैसेज नहीं दिख रहा है. देखो जैसे पहले तुमको ये मैसेज दिखा था,
example, line number 3, identify expected, 1 error. You saw this message. Now, if you don't see any message, listen to me carefully. If you don't see any message, इसका मतलब your program is correct. तो अगर तुम्हारा प्रोग्राम रॉन्ग है तो कंपाइलर मैसेज देगा, अगर करेक्ट है तो कुछ मैसेज नहीं देगा, वो प्रॉम्प्ट को फिर से डिस्प्ले कर देगा. अच्छा, now there is one more thing which you should observe, and that is this. So what you must have observed is that after successful compilation, I repeat, after successful compilation, what the compiler did is it created a file whose name is example.class. तो ये जो फाइल है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं क्लास फाइल. ये क्लास फाइल. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्लास फाइल में है क्या, इसके अंदर है क्या. तो ये जो क्लास फाइल है ना, इसके अंदर है, सी व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर, इसके अंदर है बाइट कोड. ओके, अगेन बाइट कोड विल डू इन ग्रेट डिटेल नेक्स्ट लेक्चर. अभी एकदम शॉर्टली आई जस्ट टेल यू व्हाट इज बाइट कोड. टेल मी दिस इज व्हाट कोड. ये कोड को क्या बोलते हैं, इसको व्हाट इज दिस कॉल्ड? सोर्स कोड. हाँ, इसको बोलते हैं सोर्स कोड, जो हमको समझ में आता है, कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है. कंप्यूटर को समझ में आता है मशीन कोड, ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज. मशीन कोड का मतलब द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस. अब ये बाइट कोड क्या है? तो ये जो बाइट कोड है ना, इट इज एन इंटरमीडिएट कोड. इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सोर्स कोड एंड मशीन कोड. सोर्स कोड हमको समझ में आता है, मशीन कोड कंप्यूटर को समझ में आता है, बाइट कोड किसी को समझ में नहीं आता है, किसी को नहीं, ना हमको ना कंप्यूटर को. स्टिल नाउ यू विल वंडर, तो फिर बाइट कोड इधर जनरेट क्यों हुआ? ओके, तो उसका आंसर मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा. फॉर टाइम बिंग खाली इतना समझो कि जब हमने ये कमांड दिया जावा सी example.java, हमने कंपाइलर को इन्वोक किया. कंपाइलर ने क्या किया, इधर से सोर्स कोड रीड किया, इधर से वो सोर्स कोड को उसने बाइट कोड में कन्वर्ट किया, एंड द बाइट कोड इज नाउ प्रेजेंट इन दिस डॉट क्लास फाइल. तो इसके अंदर बाइट कोड है जो किसी को समझ में नहीं आता है, और इसके अंदर सोर्स कोड है. अच्छा, so now the thing is, if you are paying attention, you must have understood कि बाइट कोड किसी को समझ में नहीं आता है. Now, if you want to run this program, if you want to see the output of this program, then you need to convert what code to what code? बोलो चलो. What code to what code? Come on, tell me. You need to convert the byte code to machine code यानी ones and zeros. तो वो काम करता है इंटरप्रेटर. बाय द वे, इंटरप्रेटर का एक और नाम है और उसको बोलते हैं JVM. आज के बाद हम इंटरप्रेटर को शॉर्ट में बोलेंगे JVM. JVM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन. ऑल्दो वी कॉल इट अ मशीन, प्लीज ध्यान से सुनना, ऑल्दो वी कॉल इट अ मशीन, इट इज नॉट इन रियलिटी अ मशीन, इट इज बेसिकली अ प्रोग्राम. ओके, और उसको बोलते हैं JVM. So interpreter is also called Java Virtual Machine, JVM, but it is not a machine, it is also a program. अच्छा, अब JVM क्या करेगा, ये जो डॉट क्लास फाइल है ना, इसमें से बाइट कोड को ले लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में. अब एक बार कंप्यूटर को मशीन कोड मिल जाता है ना, मशीन कोड, तो फिर वो आउटपुट जनरेट कर सकता है. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और कमांड देना पड़ेगा. लुक एट द कमांड प्रॉम्प्ट. So now we'll give the command Java, we'll type only Java, and I'll type only the class name example. अभी ये दो कमांड्स है ना, ये तुम बार बार भूलोगे, तो इधर हमेशा याद रखना, जब तुम C लिखते हो ना, C, तो दैट मीन्स यू आर इन्वोकिंग द कंपाइलर, और जब तुम वो C को हटा देते हो, दैट मीन्स यू आर इन्वोकिंग द JVM. While invoking the compiler, you should write the entire file name. And while invoking the JVM, you should write just the class name example without .java. Now I'll hit the enter key. See, I'll hit the enter key, and on the command prompt itself, you will see the output. There is some problem with my enter key today, I guess. Okay, so once again, I'll hit the enter key. Just a minute, guys. Okay, now I'll hit the enter key. Let's try again.
what is the problem? This has nothing to do with Java. There is some problem with my computer, I guess, or with my operating system. So one more time, yes. So now see, you see welcome to Java. All you need to do is just hit the enter key over here and you will see this output, welcome to Java. Okay, now I hope you understood how to do the compiling and how to do the executing. All right. So this first stage was called compiling, this stage, and the second stage was called executing. Now over here, let's talk about the program once again. So in the program, you see two SOP statements. Now I'll change the program a little. Okay. So what I will do is, ये देखो मैं इधर से ना ln हटा रहा हूँ. ध्यान से देखो. I am removing the ln. Now I'll save the program again. Save the program again. Now please be attentive because I'm going to ask you a question. Now I'll remove the ln from here. Okay. I save the program. So I save the program. After saving, I will recompile the program. So, by the way, if you want the same commands again, अगर तुमको ये command फिर से चाहिए ना, you just need to press the arrow key of the keyboard. So see, now I'm pressing the arrow key of the keyboard. You don't need to type the commands again. तो अगर तुम up arrow key press करोगे तो पुराना commands आते जाएगा. So now I'll hit the enter key. Okay, no message. यानी compilation is successful. Now see this command. Sorry. All right, I'll hit the enter key again. अब आउटपुट को ध्यान से देखो, तुमको ये वेलकम टू जावा देखो एक ही लाइन पे दिख रहा है. सो नाउ कैन यू टेल मी कि ये ln क्या करता है? इधर जो ln मैंने हटा दिया था ना, वो क्या काम करता है? कैन यू टेल मी? कम ऑन, come on. Next slide. Yes, yes. This ln is similar to /n. It is similar to the enter key of the keyboard. क्या होता है ना, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, वरना तुम समझोगे कुछ और, मैं बोलूंगा कुछ और. जब हम ln लिखते हैं ना, ln brings the subsequent output on the next line. I repeat the word subsequent. If you write ln over there, the next output will come on the next line. तो ये जो ln है ना, ln, ये वाला ln, ये ln इसको अफेक्ट करता है, इसको. All right, because of this ln, this Java will come on the next line. Okay, so I hope you understood this. Anyway, so we studied how to do editing, we studied how to do compiling, we studied how to do executing. Now, something very important जो तुमको Java programming में काम आएगा, इसे ध्यान से सुनना. अभी इसको समझो, मैं सेव करके ऐसे रख देता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ. ओके, नाउ आई एम कॉपिंग दिस सेम फाइल. इसको है ना मेरे को कॉपी करो, कॉपी. ऑलराइट, अब होता क्या है ना, ध्यान से सुनना, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर प्रैक्टिकल. जब तुम प्रैक्टिकली करने बैठोगे ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स तुमको आएंगी. अब होता क्या है ना कि ये जो बिन है ना, बिन, इसमें तुमको देखो ये सब फाइल्स भी दिख रहा है जो सिस्टम जनरेटेड फाइल्स है. ठीक है, अब तुम भी अगर अपना फाइल्स बिन में रखोगे ना, तो इट विल बिकम अ मेस, इट विल बी अ क्लटर. So ideally what we should do is we should store our programs in a separate file, in a separate folder. So let's say I go to C drive. C drive में मेरा एक फोल्डर है, ये जावा प्रोग्राम्स. यहाँ भी मैंने इसका सिक्योरिटी ना वो चेंज करके रखा है. आई होप यू रिमेंबर सिक्योरिटी, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, तो जब तुम ये फोल्डर क्रिएट करोगे, इसका भी देखना सिक्योरिटी तुमको ये अलाउ करता है कि नहीं. ओके, जस्ट गो इनसाइड दिस एंड इधर न्यू पे क्लिक करके देखो. इट इज क्वाइट पॉसिबल कि तुमको बाय डिफॉल्ट पहले से ये दिखा रहा है. तो अगर ये सब चीज नहीं दिखा रहा है, तो इसका सिक्योरिटी सेटिंग्स चेंज करना. एनीवे, so what I have done is in my C drive I have created a folder called Java programs. Now I will save this example.java over here. तो तुम भी जब प्रोग्रामिंग करोगे ना, तुमको भी क्या करना पड़ेगा, एक अलग फोल्डर बनाना पड़ेगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और उसमें तुम प्रोग्राम सेव करोगे. ओके, नाउ लेट्स से आई वांट टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाले पाथ में जाना पड़ेगा. तो देखो, अब मैं फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं. ओके, अब कमांड प्रॉम्प्ट में देखो ये पुराना पाथ है. अब इसको इस बार चलो मैन्युअली करते हैं, cd. ओके, नाउ सी, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, c कोलन स्लैश, और उसके बाद मैं लिखूंगा जावा प्रोग्राम्स. अपर केस, लोअर केस, डज नॉट मैटर ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. जावा में इट मैटर्स, इधर मैटर नहीं करता है, मेरे कमांड्स में मैटर नहीं करता है. सो आई हिट द एंटर की. अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ देखो सेम.
तो सबसे पहली बात, यू ऑलवेज चेंज द पाथ. व्हाई? बिकॉज यू वांट टू एक्सेस द प्रोग्राम इन दैट पाथ. अब इधर मैं कंपाइलेशन का कमांड दूंगा. सो मैं कमांड दूंगा जावा सी example.java. okay, and I hit the enter. Now when I hit the enter key, तुम देखोगे ऐसा मुझे बोल रहा है Java C is not recognized as an internal or external command. Can you unmute and can you tell me कि इधर क्या प्रॉब्लम हुआ है? Can you tell me what is the problem? Come on, take a guess. It's okay if you're wrong. Take a guess. Sir, the Java C command is only valid in the user's directory. हाँ, या फिर very good, almost correct. क्या होता है ना, वी हैव इंस्टॉल्ड जावा इन दैट बिन फोल्डर. जावा का जो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन फोल्डर है ना, वो बिन फोल्डर है. ओके, जावा इज नॉट इंस्टॉल्ड इन दिस फोल्डर. तो ये जो फोल्डर है ना, इसके अंदर ये जावा सी कमांड काम नहीं करेगा. ऑलराइट, तो अभी क्या करने का? तो अब इसके लिए मैं तुमको दो सोल्यूशन बताऊंगा, एक टेम्पररी सोल्यूशन, एक परमानेंट सोल्यूशन. टेम्पररी सोल्यूशन ये है कि तुम लिखो set path इक्वल टू, by the way there is a space over here, there is a space over here, ये देखो. फिर तुम क्या करो, ये जो bin है ना, bin, इसका ना पाथ कॉपी कर लो, कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट, एंड इसको इधर पेस्ट कर लो एंड हिट द एंटर की. जब एंटर की हिट करोगे कुछ होगा नहीं. ओके, ये देखो, अगर तुमको ऐसा दिखता है, इफ यू सी द सेम प्रॉम्प्ट अगेन, दैट मींस एवरीथिंग इज करेक्ट. ओके, बाय द वे आई सजेस्ट दैट एट दिस पॉइंट यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. मेनली तुमको ये सेट पाथ चाहिए होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ऑलराइट, अभी मैं फिर से वो कमांड देता हूं. तो अगेन कीप योर आई ओवर हियर. एक आंख इधर रखना, एक आंख इधर रखना. ओके, सो आई गिव द कमांड जावा सी, आई हिट द एंटर की. ऑलराइट, व्हेन आई हिट द एंटर की, देखो तुमको सेम प्रॉम्प्ट इधर दिखेगा. मैंने 2 बार एंटर किया इसलिए तुमको 2 बार दिख रहा है. एंड इधर तुमको एग्जाम्पल डॉट क्लास दिखेगा. इसका मतलब द कंपाइलेशन वाज सक्सेसफुल. इसका मतलब आई हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम ऑफ जावा सी नॉट रिकॉग्नाइज्ड. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, ये सेट पाथ करना पड़ा, सेट पाथ. ओके, और इसको मैं एग्जीक्यूट भी कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो एग्जीक्यूट भी कर सकता हूं. तो ये सो आई एग्जीक्यूट दिस एंड आई गेट आउट. एनी डाउट्स क्लियर? एनी डाउट्स? अच्छा, अब मैंने तुमको क्या बोला कि ये जो है ना जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इसका 2 सोल्यूशन है, एक टेम्पररी एक परमानेंट. तो ये सेट पाथ जो है ना, ये टेम्पररी सोल्यूशन है. अभी टेम्पररी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि समझो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर दिया. लिसन केयरफुली, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर दिया. नाउ आई ओपन द प्रॉम्प्ट अगेन. ओके, तो पहले एज यूजुअल मेरे को नॉर्मल पाथ तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो जावा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मेरा जो जावा प्रोग्राम है वो इस फोल्डर में है. तो जो नॉर्मल पाथ है वो तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा. ओके, सो cd c:/java programs. ऑलराइट, उसके बाद अभी ये देखो, फिर से मैं देता हूं, समझो जावा सी, मैं देता हूं जावा सी example.java. ऑलराइट, देखो फिर से काम नहीं कर रहा है. क्यों? कि प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरा सेट पाथ वाला कमांड था ना, सेट पाथ, इट विल वर्क ओनली एज लॉन्ग एज द कमांड प्रॉम्प्ट इज ऑन. अगर तुमने कमांड प्रॉम्प्ट को ऑफ कर दिया या फिर तुमने फोल्डर को चेंज कर दिया, समझो ये फोल्डर के बदले तुम कोई और फोल्डर में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो तुमको फिर से सेट पाथ करना पड़ेगा. सो यू विल हैव टू डू सेट पाथ एवरी टाइम यू डू जावा प्रोग्रामिंग. ओके, सो दिस इज अ टेम्पररी सोल्यूशन. अब तुमको इधर है ना बार बार वो सेट पाथ नहीं करना है, तो तुम क्या करो, वंस एंड फॉर ऑल ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो. अब जो मैं तुमको सिखाने जा रहा हूं थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनना. नॉट मेनी टीचर्स टीच दिस प्रॉपरली, ठीक है? सो आई क्लोज द कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, और प्लीज ध्यान देना, देखो ये काम नहीं कर रहा है. सी, पे अटेंशन, इट इज नॉट वर्किंग. सो आई क्लोज द कमांड प्रॉम्प्ट. नाउ सर्च में जाके ना टाइप करो एनवायरनमेंट. ओके, मैंने पहले से टाइप किया था तो इससे इधर आ गया. तुम्हारे इसमें नहीं आएगा ना, तो तुम पूरा वर्ड टाइप करो एनवायरनमेंट. So you will see one option, edit the environment variables, या फिर तुमको कंट्रोल पैनल का भी ऑप्शन दिख सकता है. So now you go inside this option, edit the system environment variables. तो अब तुमको ये वाला एक टैब दिखेगा, ठीक है? अब इधर be attentive, please be attentive. चाहिए तो ये सब नोटबुक में स्क्रिबल करके रखो. अब इधर तुमको नीचे दिखेगा environment variables, so go over there.
अब इधर तुमको दो चीज दिखेगा, एक दिखेगा यूजर वेरिएबल्स और दूसरा दिखेगा सिस्टम वेरिएबल्स। तो हमें सिस्टम वेरिएबल्स में कुछ करना है। तो ये सिस्टम जो वेरिएबल्स है ना, इधर तुम क्या करो, तुम है ना, तुम क्लिक करो एडिट पे, देखो एडिट, हियर एडिट, ऑलराइट। और सॉरी सॉरी आई फॉरगॉट वन थिंग, ये जो सिस्टम वेरिएबल्स है ना, सिस्टम, इसमें इसमें तुम क्या करो, ये देखो इधर तुमको एक पाथ करके कुछ दिख रहा है, पाथ करके, ऑलराइट। तो अभी तुम्हारे लैपटॉप में भी ना तुमको ऐसा पाथ करके कुछ दिखाई देगा, तुमको ऐसा पाथ करके कुछ दिखाई देगा, यू विल सी समथिंग लाइक दिस। सो यू सिलेक्ट दिस पाथ, you select this path and you click on edit. Okay, so I'm repeating one more time, listen to me carefully. Okay, listen to me carefully. पहले इधर टाइप करो एनवायरमेंट वेरिएबल्स, नीचे लेफ्ट साइड में सर्च में, तो तुमको ये दिखाई देगा, गो इनसाइड एनवायरमेंट वेरिएबल्स, या सिस्टम वेरिएबल्स में तुमको पाथ दिखेगा, सो क्लिक ऑन पाथ एंड क्लिक ऑन एडिट, क्लिक ऑन एडिट। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। ना व्हेन यू क्लिक ऑन एडिट तुमको है ना ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा। सो इधर क्या करो, इधर क्या करो, न्यू पे क्लिक करो, न्यू पे। अब न्यू पे क्लिक करोगे ना तो यू विल सी द कर्सर ब्लिंकिंग ओवर हियर। ओके, सो नाउ व्हाट यू डू, इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखो। अब तुम क्या करो, ये बिन में जाओ, ये बिन में जाके, ये बिन में जाके करो कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट। दैट मीन्स तुमने बिन का पाथ कॉपी कर लिया है, और वो जो बिन का पाथ है, ये देखो तुमने इधर एडिट किया, नहीं सॉरी सॉरी, मैं पाथ में गया, मैं एडिट में गया, मैं न्यू में गया। तो अभी ये जो है ना, इधर का जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, इधर तुम वो पाथ पेस्ट कर दो। सो सी केयरफुली, व्हाट यू हैव डन इज यू हैव पेस्टेड द पाथ ऑफ बिन ओवर हियर। ओके, और इसके बाद तुम ओके कर लो, इसके बाद तुम ओके कर लो। Okay, any doubts clear? Because there's one more thing which I wish to tell you. Any doubts clear? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर मुझे वो एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा तुम्हारे में पाथ होगा ही नहीं शायद। है। एक्चुअली मैं कैमरा ऑन करके बता सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, अभी इट विल नॉट राइट नाउ। एनीवे, अगर उसका ऑप्शन नहीं है ना तो मैं तुमको बाद में बताऊंगा क्या किया जा सकता है। बट फॉर टाइम बिंग ऐसा हो सकता है, नाउ लिसन टू द नेक्स्ट थिंग केयरफुली, ऐसा हो सकता है कि ये जो ना, ये तुमको पाथ ही दिखाई ना दे। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि तुमको ये पाथ ही दिखाई ना दे। तो अगर तुमको ये पाथ नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको मोस्टली तो दिखाई देगा 99%, बट अगर पाथ नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो तुम फिर एडिट पे क्लिक नहीं करो, तुम क्या करो, न्यू पे क्लिक। न्यू पे क्लिक करने के बाद इधर इधर तुम डाल दो पाथ, पाथ, ऑलराइट। एंड इधर इधर तुम वो बिन का जो पाथ है ना, उसको तुम कॉपी करो, उसको तुम कॉपी कर लो, और उसके बाद तुम ओके पे क्लिक करो, ऑलराइट। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड डू इफ यू डोंट सी पाथ ओवर हियर। ओके, सो दिस गाय हु आस्क्ड मी जस्ट नाउ ना, तो तुम भी क्या करो, अगर तुमको एडिट नहीं दिखा रहा है ना, तो तुम ये प्रोसीजर फॉलो करके देखो वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ओके, ओके सर, इन सिस्टम वेरिएबल्स ना सर? हाँ, सिस्टम वेरिएबल्स। ओके, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर डाउट? एक्चुअली वो मेरे को न्यू एडिट डिलीट कुछ नहीं बता रहा है, ये ऐसा प्रॉब्लम। So maybe we'll have to look about this later on. Okay, we'll talk about this later on. Maybe you can call me after the lecture or tomorrow. Okay, all right. Okay, so what you do is, if this is the basic procedure, अब मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरे में पाथ पहले से था, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। ऑल राइट, अच्छा, अभी मेरे में मैंने वो पाथ, बिन का पाथ डाल दिया है। अगर चाहिए तो एक और बार देखते हैं। ये देखो, मैं एडिट पे गया, और अभी देखो इधर बिन का तुमको पाथ दिखाई देगा, ये देखो। ऑल राइट, so click on OK over here, click on OK over here, okay, and again click on OK. Acha, now I start the command prompt again. Okay, as usual तुमको ये वाला पाथ तो चेंज करना ही पड़ेगा, इसका कंपाइलेशन से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये है cd c:/java programs. All right, and hit the enter. All right, so now you are inside this. अभी देखो, again one eye over here, one eye over there. Now I'm going to type java c example.java and I hit the enter key.
So when I hit the enter key, see the compilation is successful. You will see example.class. So now you have solved that problem of path permanently. Okay. So I have showed you two solutions. या तो permanent या temporary, दोनों में से कोई भी solution use करो and you can solve the problem this way. So this was all about editing, compiling, executing all this. तो अब जो भी हमने इधर तक पढ़ा ना, इसको क्विकली समराइज करते हैं और फिर तुम इसको कॉपी भी करोगे. So see, by the way, before we summarize this, one more small simple thing. हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि जावा इज अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज. तो अब फ्री फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए ना एक तुमको चीज डायरेक्टली दिखाता हूँ. ये वही जावा प्रोग्राम है जो तुमने अपने नोटबुक में लिखा था. इस प्रोग्राम को तुम ऐसा भी लिखोगे ना तो भी चलेगा. ओके, सो यू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. तो फ्री फॉर्म का मतलब होता है कि तुम बीच में कितना भी स्पेसेस दो, बीच में लाइंस दो, चलेगा. दैट डज नॉट मैटर टू द जावा कंपाइलर. अब जैसे इधर देखो, मैंने ये system.out.println 3 लाइंस में लिखा, चलेगा. What is important is the order is important. That means you cannot write println.out.system. Okay, so Java is a free form language. तुम ऐसा बीच में स्पेसेस लाइंस छोड़ोगे चलेगा, बट ऐसा करना नहीं चाहिए. Anyway, now let's summarize what we studied in the last half an hour. अभी सबसे पहले प्रोग्राम का एडिटिंग कैसे करते हैं? तो सिंपल, तुम क्या करो, यूज अ टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड. नोटपैड ओपन करके यू टाइप एंड सेव द प्रोग्राम एज .java फाइल. When you are creating the file, see to it that a file name should be same as the class name. अभी द ब्रैकेट में, I mean parenthesis में मैंने लिखा है main. तो होता क्या है ना, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना. अब जो मैं बोलने वाला हूं ना, either understand this or ignore this. If you don't understand this right now, you will understand this in chapter number 4. होता क्या है ना कि in one Java program you can have multiple classes. In one Java program you can have multiple classes, but you can have only one void main. So let's say one program has 10 classes. तो वो 10 में से ना किसी एक क्लास में ही तुम void main को रख सकते हो. अभी अगर 10 क्लास है तो 10 क्लास का अलग अलग नाम होगा, example1, example2, example3. So now the name of your file should be same as the name of that class which has the main. ठीक है, अभी मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि अभी अपने प्रोग्राम में एक ही क्लास है. मोर ओवर, वो जो ई हमने लिखा था उसको अपर केस में लिखना जरूरी नहीं है, वो कन्वेंशन है. हाँ, बट एक बात पे ध्यान देना कि अगर क्लास में, अगर प्रोग्राम में तुमने ई कैपिटल रखा है तो फाइल नेम में भी ई कैपिटल होगा. ये इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, एनीवे, सो दिस इज ऑल अबाउट एडिटिंग. तो तुमने टाइपिंग, कटिंग, पेस्टिंग ये सब कर दिया यूजिंग नोटपैड और यूजिंग समथिंग एल्स. अब कमांड प्रॉम्प्ट पे तुम ये कमांड दो, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा. सो इधर ये सी है, सी, तो इसका मतलब इट विल इन्वोक द कंपाइलर और द इंटरप्रेटर. कम ऑन, it will invoke the compiler. Compiler क्या करेगा? It will create a new file called example.class, and example.class के अंदर होगा बाइट कोड, जो ना मुझको समझ में आता है, ना तुमको आएगा, ना कंप्यूटर को आएगा. इसका इंपॉर्टेंस क्या है नेक्स्ट वीक देखेंगे. एनीवे, अब बाइट कोड से आउटपुट नहीं आ सकता क्योंकि आउटपुट देने के लिए ना कंप्यूटर को मशीन कोड चाहिए. तो हम फिर कमांड देंगे जावा एग्जाम्पल विच विल इन्वोक द इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट द बाइट कोड टू मशीन कोड एंड विल फाइनली जनरेट द आउटपुट. ओके, सो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म. And over here, don't forget to do things related to set path or related to that environment variables. Now, very quickly, you copy all this. Come on. Take 2-3 minutes, copy all this. If you have doubts, you can ask me doubts. And whenever I tell you to copy, don't take a screenshot and just take time to chill. क्योंकि क्या होगा, जितना तुम लिखोगे ना उतना तुमको ज्यादा समझ में आएगा.
All right, few more seconds. Please increase the speed of your writing, especially if you're in comms IT. If you're in comms IT, you have a subject called data structure, जिसका theory exam भी होता है. Okay. और उसका अगर theory exam हुआ तो होगा ही definitely. तो उसका जो theory exam होता है उसमें you will have to write programs which are of 8 to 9 pages. Okay, minimum 8 pages. 8. Okay, so that is why you need to increase your speed of writing. Okay, let's move further. If it's not complete, take a screenshot. Come on, take a screenshot. All right. Now, let's do one very interesting and very important topic called command line arguments. So ये heading दो and चाहिए तो side में लिखो important. Come on. 1.3 command line arguments. Very interesting, very important. You will need this throughout the entire syllabus. All right, now please be attentive. Things are interesting, things are important. अभी जो मेन है ना उसका फर्स्ट लाइन ऐसा दिखता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स ब्रैकेट्स. ओके, आज के बाद इसको मैं ब्रैकेट्स बोलूंगा, ब्रैकेट्स. अभी इधर पब्लिक स्टैटिक क्यों लिखते हैं, दैट आई विल टेल यू इन चैप्टर नंबर 4, नॉट बिफोर दैट. वॉइड मेन क्यों लिखते हैं वो तुमको पता है, नहीं पता तो क्विकली बता देता हूँ. मेन इज द नेम ऑफ द मेथड, ये नाम है मेथड का, एंड वॉइड इज इट्स रिटर्न टाइप. वॉइड का मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करता है. अच्छा, अभी हम ये फोकस करेंगे स्ट्रिंग आर्क्स पे, इस पे अभी हम फोकस करने वाले हैं. अभी होता क्या है ना, द मेन ऑफ जावा टेक्स वन आर्ग्यूमेंट एंड दैट आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड आर्क्स. सो आई रिपीट, द मेन ऑफ जावा टेक्स वन आर्ग्यूमेंट. लुक एट माय माउस पॉइंटर. द मेन ऑफ जावा टेक्स वन आर्ग्यूमेंट कॉल्ड आर्क्स, and this args is an array of strings. Now pay attention to where I am pointing and what I am saying. वो correspondence पे ध्यान दो. Okay, फिर से बोलता हूँ. The main of Java takes one argument called args, where args is an array of strings. अब array of strings क्या होता है, वो कैसे दिखता है, तो तुमको मैं एक array बताता हूँ. So this is the array args. इसमें 4 elements है. I hope you remember, अगर 4 elements है तो position number will be from 0 to 3, और इसमें 4 elements है. Now unmute yourself and tell me, is this an array of strings? No. What is it? Very good. Your answer is correct. No is the correct answer. But what is it? Can you tell me? So the answer is, although very good, the answer is this is not an array of strings. This is an array of integers. Why? Because 11, 35, 67, 22, all these are integers. Okay. So each element of args is an integer. अब array of strings कैसे दिखेगा, तो वो है ना ऐसे दिखेगा, ये देखो ऐसे. So over here maths is a string, OOPM is a string, DS is a string, DLD is a string. तो ये सब strings है. By the way, a string is a collection of characters. Simple. अगर तुम बहुत सारे characters को एक साथ लिखते हो तो उसको string बोलते हैं. So here args of 0 is a string maths. Args of 2 is a string DS. तो अभी ये जो पूरा तुमको दिख रहा है ना, ये पूरा this is an array of strings. तो ये जो args है ना, it is going to be an array of strings. Any doubts here? Any doubts? Okay. अभी ध्यान से सुनो, things are very interesting, very difficult. चलो unmute yourself and tell me, अगर क्लास का नाम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, अगर प्रोग्राम का नाम एग्जाम्पल है तो उसका एग्जीक्यूशन कमांड क्या होता है, बताओ. अभी बस एक 5 मिनट पहले हमने कंप्लीट किया, उसका एग्जीक्यूशन कमांड क्या होगा, बोलो बोलो, कम ऑन हरी अप. उसका एग्जीक्यूशन कमांड होगा जावा एग्जाम्पल, विच विल इन्वोक द इंटरप्रेटर. ओके, अब होता क्या है, ध्यान से सुनना. इंस्टेड ऑफ राइटिंग जावा एग्जाम्पल, अगर मैंने ये लिखा जावा एग्जाम्पल जैगजिल्टिम, जावा एग्जाम्पल जैगजिल्टिम, दिस इज वैलिड. अब इधर क्या होगा ना, रेड कलर एक काम करेगा, ग्रीन कलर दूसरा काम करेगा. पहले रेड कलर क्या काम करेगा, तो ये वही काम करेगा जो इसने पहले किया था. कौन सा काम? इट विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, इट विल शो यू द आउटपुट. So Java example will invoke the interpreter will convert bytecode to machine code, it will show you the output. Okay, तो ये वही काम करेगा. अब ये जैगजिल्टिम क्या है, तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन,
ये जो जैक है, ये जिल है, ये जो टिम है, व्हाट आर दे? आर दे इंटीजर्स? आर दे रियल नंबर्स? व्हाट आर दे? बताओ क्या है वो? सी योर योर नॉलेज ऑफ सी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमको डेटा टाइप्स और वो सब अगर अच्छे से आते हैं ना तो तुम ये आंसर कर पाओगे। ये जो जैक है, हाँ बोलो क्या है? कैरेक्टर्स। वेरी गुड। अब तुमने कैरेक्टर्स बोला ना, तो इससे अच्छा मैं एक दूसरा वर्ड बोलता हूँ, दे आर स्ट्रिंग्स। ओके, तो यू आर ऑल्सो करेक्ट। सो जैक इज अ स्ट्रिंग, जिल इज अ स्ट्रिंग, टिम इज अ स्ट्रिंग। एनीवे, अभी ये हेडिंग है ना, हेडिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो अभी ध्यान से सुनो, ये जो जैक जिल टिम है ना, इनको हम बोलेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, इनको हम बोलेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। पहली बात ये कि ये जो लाइन है ना, जावा एग्जाम्पल, ये लाइन को हम बोलते हैं, ये लाइन को हम बोलते हैं कमांड लाइन। क्यों कमांड लाइन? क्योंकि ये लाइन लिख के ना हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कमांड दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन। और ये जो जैक जिल टिम है ना, ये कमांड लाइन पे हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिया है, तो इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, ठीक है। सो नाउ द थिंग इज, ठीक है, तुमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स दे दिया, अब होगा क्या? अब होगा क्या? तो ये मत भूलो, मैंने तुमको बोला है कि वर्ड में टेक्स वन आर्ग्यूमेंट कॉल्ड आर्क्स, वेयर आर्क्स इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अभी क्या होगा ना, अभी क्या होगा, ये जो जैक जिल टिम है ना, जैक जिल टिम, automatically, I repeat, automatically, they will get stored in this arcs one below another. They will get stored in arcs one below another. So if you're really attentive, tell me what will be the value of arcs of 0? Jack. Abhi to simple hai, arcs of 1. Jill. And arcs of 2 is obviously Tim. Okay. अब इसको मैं ना एक्चुअली तुमको एग्जीक्यूट करके बताऊंगा, सो दैट यू आर कन्विंस, सो दैट तुमको पता चले कि हाँ सच में ऐसा होता है। ठीक है, सो नाउ सी, दिस इज द सेम प्रोग्राम। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैं ये प्रोग्राम को ओपन कर रहा हूं। ऑलराइट, अच्छा, बाय द वे, वन स्मॉल सिंपल थिंग, जस्ट लाइक सी लैंग्वेज, जावा में भी ना एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या? जावा में जब तुम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो ना, उसमें अगर तुम डबल कोट्स लिखते हो, डबल कोट्स, तो इट विल बी डिस्प्लेड एज इट इज। एंड व्हेन यू राइट समथिंग विदाउट द डबल कोट्स, तो उसका वैल्यू डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैंने इधर लिखा आर्क्स ऑफ 2, तो मेरे को बोलो ये जो सेकेंड एसओपी है, ये मॉनिटर पे क्या डिस्प्ले करेगा? बोलो, सेकेंड एसओपी मॉनिटर पे क्या डिस्प्ले करेगा? आर्क्स ऑफ 2। वेरी गुड, आर्क्स ऑफ 2, या समझो इसको मिलता है आर्क्स ऑफ 1। अभी इसी को ना देखो, मैं विदाउट डबल कोट्स लिखूंगा, मेरे को एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट है, जो मैं विदाउट डबल कोट्स लिखा हूं, आर्क्स ऑफ 1। तो अभी क्या होगा ना, जस्ट लाइक सी लैंग्वेज, अभी क्या होगा, इसका जो वैल्यू है ना, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है ना, वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, एनीवे, अभी इसको मैं सेव कर रहा हूं। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, तो एज यूजुअल सेम प्रोसीजर। ओके, सो ये देखो, इसको ऑलराइट, इसको ये देखो, सेम प्रोसीजर, cd:/java programs। ओके, फिर उसके बाद जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, कहा मैंने, ओके हाँ, मैंने इधर है ना, देखो नाम ए दिया था, ए। तो अगर मैं इधर ए लिखूंगा ना, तो मेरे को इधर भी ए लिखना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, मैं इधर ही चेंज कर देता हूँ, आर्क्स। ऑलराइट, सो मैंने चेंज कर दिया, मैंने सेव कर दिया। अब मैं रिकंपाइल करूंगा, अप एरो की दबाऊंगा तो कमांड अपने आप आ जाएगा। तो देखो कंपाइल हो गया, इधर देखो क्लास फाइल आ गया, ये देखो, ऑलराइट, क्लास फाइल आ गई। ओके, नाउ ये देखो, नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इंटरेस्टिंग है। मैं टाइप करूंगा जावा एग्जाम्पल। सो जावा एग्जाम्पल विल डू द सेम वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। अब समझो मैं कुछ भी टाइप करता हूं, तो समझो मैं टाइप करता हूं बिटकॉइन एडा ईथर, बिटकॉइन एडा ईथर। ओके, नाउ इफ यू आर रियली अटेंटिव, तो तुम मुझको बोलो, जब मैं एंटर की हिट करूंगा, तो ये वाला जो एसओपी है, पहला वाला जो एसओपी है, बोलो इसका आउटपुट क्या आएगा? बोलो, बिटकॉइन
इसका आउटपुट आएगा ये एडा एडा। ओके, सो देखो अभी मैं एंटर हिट करूंगा। सो जब मैं एंटर हिट करूंगा तो ये देखो ये एडा आया। ओके, बाय द वे देखो सेकंड एसओपी में मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा था तो वो एज इट इज डिस्प्ले हुआ, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट एसओपी, तो देखो उसका आउटपुट देखो ये एडा आया। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। इधर है ना क्या हुआ, ये जो बिटकॉइन एडा ईथर है ना, दे आर 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स। बाय द वे ऐसा जरूरी नहीं कि तुम 3 स्ट्रिंग ही टाइप करो, जितना टाइप करने का करो। होगा क्या, जो पहला स्ट्रिंग है बिटकॉइन वो स्टोर हो जाएगा आर्क्स ऑफ 0, दूसरा आर्क्स ऑफ 1 में, तीसरा आर्क्स ऑफ 2 में। अभी समझो इसको मैं चेंज करता हूँ, 2 कर देता हूँ। ठीक है, अभी 2 करने के बाद देखो इसको मैं सेव करूंगा। अभी इधर कंपाइलेशन करना जरूरी है वरना तुमको पुराना आउटपुट दिखाई देगा। सो कंपाइल, हाँ चलो बोलो अभी क्या आउटपुट आएगा। कम ऑन सिंपल, क्या आएगा? ether. Because now arcs of 2 is ether. Okay, so this was the concept of command line arguments. ये कॉन्सेप्ट बहुत बार काम आएगा, तो तुमको ये याद रखना है। फॉर टाइम बिंग ये प्रिंटेड नोट्स में है, तो तुम लिख दो रेफर पी एन 8, रेफर पी एन 8, तो रेफर पी एन 8 में ये है। ओके, तुम्हारे नोटबुक में ना सिर्फ एक काम करो, ऐसा लिख लो an array of strings, come on, नोटबुक में सिर्फ इतना लिखो, an array of strings looks like this, an array of strings looks like this, and ये जो डायग्राम है ना, ये क्विकली कॉपी करो। an array of strings looks like this. Okay, now the lecture is almost over, but I just need to tell you a few things in your interest. मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना प्लीज। अब होगा क्या है ना कि while you are attending this lecture, okay, जब मैं functions और वो सब बात कर रहा था, तुम में से बहुत लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा, और वो ये the question, the thought in your mind could be if my C language is not good, okay, if I am not good in C programming, will I understand Java? So the answer is you will understand Java, but with some difficulty. Okay, you will have some problems. So in your interest, what I have done is I have kept a session for you, which is called C language refresher session. और इसमें ना मैं वो चीजें कवर करूंगा जो तुमको जावा में काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आई विल कवर डिक्लेरेशंस, डेटा टाइप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, स्विच, फंक्शंस, एरेज, हाउ टू ट्रैवर्स एरेज, वो सब। ठीक है, तो एक बार तुम ये सेशन बैठोगे ना, तो उसके बाद क्या होगा ना, तुमको जावा में कभी कोई डाउट नहीं आएगा, ऐसा डाउट जो सी लैंग्वेज से रिलेटेड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स, तो आई एम श्योर किसी किसी के माइंड में डाउट आ रहा होगा। तो अगर तुमको आर्ग्यूमेंट पैरामीटर ठीक से नहीं समझा है ना, तो उसका रीजन ये है कि तुम्हारा फंक्शंस का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। एंड फंक्शन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि क्या होगा ना, चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स हर एक क्लास में 3-3, 4-4 फंक्शन होगा, और फंक्शन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, फ्लो को समझना इंपॉर्टेंट होता है कि कंपाइलर इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ऐसे। So I will take this session on Thursday evening, same time 5:30 p.m. But this session will be only for those students who have taken admission. Okay, this will not be a demo lecture. So if you want to join the course, please take admission by tomorrow night. Okay, so that I know how many students or which all students are going to attend the Thursday's lecture. All right. Because this Thursday's session is only for students who have taken admission, who are willing to join the course. And if you are joining the course, then this session is very important for you. Don't miss this session. अभी इधर एक फनी चीज है जो इसके बारे में मैं बात करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, they attend the demo lecture, they understand everything taught in the demo. Okay, after the demo is over, they say, अरे सर ने मस्त पढ़ाया. But still, these students don't take admission, and for a simple reason that they keep on waiting कि मेरा कॉलेज टीचर कभी ना कभी अच्छा पढ़ाएगा।
ओके तो तुमको लगता है अरे हाँ फर्स्ट लेक्चर अच्छा नहीं पढ़ा है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट योर कॉलेज टीचर कि फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है, ठीक है, सेकंड में अच्छा पढ़ाएगा, थर्ड में अच्छा पढ़ाएगा, फोर्थ में अच्छा पढ़ाएगा, और ऐसे करते 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 क्या होता है ना, एक दो हफ्ता हो जाता है, एक महीना हो जाता है, एंड आफ्टर 1 month you finally realize that your college teacher is never going to teach you well. So guys, if you are confused whether you want to join this course or not, there are only two questions which you should ask yourself. Two questions. Question number one, did I understand everything which Sandeep sir taught me? If your answer is yes, you should join the course. Question number two, am I understanding everything taught by my college teacher? If your answer is no, you should join the course. If your college teacher is not teaching you well right now, he will never teach you well anytime. Okay, so remember this one small simple thing. And now you're in semester 3, so you know very well how college teachers teach. Okay, so please take a decision tomorrow. Try joining by tomorrow night so that you can attend this refresher session. Finally, I'll just take 2 minutes to explain you the importance of Java. अपने WhatsApp ग्रुप पे बार बार मैंने तुमको बोला था कि एक वेबिनार है वो तुम देखो, उस वेबिनार का कम से कम तुम पहले 3 मिनट भी देखो तो तुमको जावा का इंपॉर्टेंस समझेगा. आई विल जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स टू क्विकली गो थ्रू दिस इंपॉर्टेंस. क्या होता है ना कि जावा इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज जिसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स यूज होता है, जो सी लैंग्वेज में नहीं था. So please understand Java is completely different from C. Okay, if you know C language, that does not mean you will be good in Java also. If you don't do Java properly, then you will have doubts throughout your entire life. Okay, as simple as that. क्यों? क्योंकि क्या होगा ना, अगर तुमने Java ठीक से नहीं किया ना, तो तुमको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं समझेगा. तो बाद में पाइथन, सेम 4 में तुमको पाइथन है, सेम 5 में जावा स्क्रिप्ट है, सेम 6 में एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग है, तो उसमें सब में तुमको हमेशा डाउट्स रहेगा विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. सो दैट इज व्हाई यू शुड टेक जावा वेरी 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 सीरियसली. होता क्या है ना कि जावा का मेनी स्टूडेंट्स डोंट टेक जावा सीरियसली, and if you don't take Java seriously na, you will never ever, your foundation concept, your foundation of that object oriented programming will always remain weak. Not only that, मैंने तुमको बोला था कि Java is used at the back end of all the websites, and that's why होता क्या है जब placements होते हैं ना, sorry, before that one more thing, Java is used at the back end of all the websites. तो जो banking websites है, एयरलाइन वेबसाइट्स है, होटल रिजर्वेशन वेबसाइट्स है, इनका जो सर्वर साइड होता है उसमें जावा यूज होता है. सो ऑल एंड ऑल जावा इज वाइडली यूज्ड एट द सर्वर साइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है जब प्लेसमेंट्स होता है ना, दिस इज समथिंग इन विच यू गाइस विल बी इंटरेस्टेड, इसे ध्यान से सुनो. जब प्लेसमेंट्स होता है ना, तो होता क्या है, उसमें दो टाइप के कंपनीज आते हैं. एक होता है कंपनीज फॉर द मासेस एंड कंपनीज फॉर द क्लासेस. तो मास कंपनीज कौन सा होता है? कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, Accenture. So if you're in colleges like, you know, DJ Sangvi, SPIT, VJTI, Swami Vivekanand, TSEC, okay, तो ये सब कंपनीज उधर आएंगे एंड एक साथ 100-200 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेंगे. But these mass companies will look for two things in students, and those two things are in C and Java. अगर तुमको मास कंपनीज में रिक्रूटमेंट चाहिए तो तुमको C and Java आना ही चाहिए, उसके बिना नहीं मिलेगा. And then there are some class companies also called dream companies like Google, Facebook, Microsoft, जिनका JP Morgan, जिनका starting salary 1 lakh per month होता है, or even more than that. Okay, so these companies, class companies, they will look for data structures. Very surprising. होता क्या है ना कि जब ये क्लास कंपनीज के इंटरव्यूज पे लोग जाते हैं ना, तो they will prepare artificial intelligence, machine learning, फलाना ना ढिंकाना, all those things. But eventually these companies will ask them concepts related to data structures. So that is why if you want to get placed, तो ये 3 टेक्नोलॉजीज तुमको अच्छे से, एकदम अच्छे से आना ही चाहिए, ये हमेशा याद रखना. All right, so guys, this is about the importance of Java. Okay, now what we'll do is we'll stop here today, and if you're joining the course, okay, so next week जब next lecture होगा, okay, उसके लिए ये please revise करना, revise everything which I taught you today so that you understand the next lecture properly. Okay,
if you want to take admission, you can WhatsApp me and I will tell you the procedure of how to pay the fees and all these things. Okay. So good night. I hope you understood everything. Okay. Take care. Bye. Any questions? Any questions? Sir, the recording. हाँ, तो इसका जो रिकॉर्डिंग है मैं YouTube पे डाल दूंगा और उसका लिंक मैं तुमको भेज दूंगा. Okay. Anything else? All right. So I'll end the meeting. That's it. Thank you very much. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. सर मिनी प्रोजेक्ट्स का कब लेंगे आप? क्या क्या? मिनी प्रोजेक्ट्स का मिनी प्रोजेक्ट तो एंड में ही होएगा ना, क्योंकि कैसे है, दैट इज द लास्ट थिंग. उसके पहले तुमको बहुत कुछ समझना पड़ेगा. बट वो कैसे होगा ना, वो उसके लिए मैं तुमको कुछ, अगर तुमको पहले ही चाहिए ना समझो मिनी प्रोजेक्ट, तो उसके लिए मैं तुमको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ऑप्शन दूंगा. तो तुमको अगर चाहिए तो तुम पहले भी कर सकते हो ऐसा. कि सर कॉलेज में तो मतलब बताया कि कोई तो ग्रुप्स फॉर्म करके मिनी प्रोजेक्ट की हाँ तो बराबर. तो नेक्स्ट लेक्चर जब अपना होगा ना, तो उसमें मैं तुमको मिनी प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दूंगा, तो तुम ग्रुप फॉर्मेशन कर सकते हो. तो सर टॉपिक कौन सा चूज करूं? मतलब कॉलेज में टॉपिक लाइब्रेरी मैन, तुमने मेरा वेबिनार देखा है? हाँ सर. तो उसमें जो लास्ट टॉपिक है ना लाइब्रेरी मैनेजमेंट, वो तुम चूज कर सकते हो, या कैलकुलेटर भी चूज कर सकते हो, बट कैलकुलेटर शायद नहीं करते. हाँ वो कुछ कॉलेजेस देते नहीं है ना हाँ, क्योंकि कैलकुलेटर. उसमें वो डेटाबेस नहीं होता, तो तुम लाइब्रेरी मैनेजमेंट कर. ओके सर. ओके. ऑल राइट.